A very good morning, respected members. On behalf of Nagpur branch of ICAI, I, Amir Suman, welcome you all to this Fireside chat with the New Age Professional series under the Young Member Mentorship Program. It is very well said that if opportunity does not knock, let's build a door. So CA is a platform which has seen a 360-degree changes over the years, and there has been a plethora of opportunities and new avenues that have emerged up. We can see newly qualified CAs are taking up very big leaps when it comes to choosing their streams of career. And there are so much things to know. And we have two wonderful speakers, CA Sharvari Watak ma'am and CA Nitesh Jagwani sir, to guide us all about these newly emerging non-traditional areas. And as a keynote speaker, we have CA Anil Bhandari sir also to guide us in this session. So moving up this session, I would now like to request CA Jiten Saglani sir, uh, Vice Chairman Nagpur branch of ICAI, to give his welcome address. Over to you, sir. Thank you, Amay, and a very good morning to one and all present here. Chairman of the Nagpur branch, CA Saket Bagadia. Chairman of Satara branch in his absentia, CA Jeevan Jagtap. Central Council member, friend, philosopher and guide, CA Anil Bhandari ji. My colleagues in the managing committee, and the two most vibrant speakers, CA Nitesh Jagwani and CA Sharvari Watak. And my dear members, a very good morning, a very happy Sunday morning to one and all. Friends, couple of days back, me and Saket sir were thinking of having something different for young members, as well as those who are already into practice. So we just were thinking of what should we do for, say, new age professionals, because age is just a number, but we just want to take it forward with the theme that why we are actually thinking of how to take this forward as a theme and program and plan a program. So while doing this, we came across many people who were doing different things. Like last year, I met Sharvari. This year, I was on a phone call with Nitesh. And I realized that these people are doing something which is totally different. And they want to do something just not as a chartered accountant, but as a professional, adding value to the, say, their own careers as well as people who are there. So we thought of having a program which was a structured program. And in that also, we wanted someone to mentor. So this program was planned this way, wherein we wanted people to come down here and have a chat with us. This is a good thought which Saket sir gave to me. And thank you so much, Saket sir, for having this thought. And this program is now planned. The first session in this series is today, and we'll be planning such more programs in days to come. And I wish to thank both the speakers for accepting the invite of Nagpur branch. Along with that, I wish to thank C. Anil Bhandari ji, who had been already practicing in the areas which are different. He had been practicing all throughout in different areas, and he had been already asking members to think beyond the, say, conventional areas. So I think he's an apt person to inaugurate this program. And thank you so much, all of you, for joining here. And with this, I wish to conclude. And thank you once again, all the members, for connecting to this program. Thank you so much. Over to you, Amit. Thank you, Jiten sir. I now call upon C. Rushikesh Wangde from Satara branch for his brief address. Amay, you need to unmute him, I guess. Okay. Good morning and welcome all the members. Our today's chief guest, CA Anil Bhandari sir, one of the very dynamic person, and he is the father of technology changes in the ICAI. So very great pleasure and we are fortunate enough to have such a great, wonderful personality who will be giving keynote address. Chairman of Nagpur branch, CA Saket Bagadia sir, CA Jeevan Jagtap sir, Chairman of Satara branch in absentia. I welcome them all. And most importantly, today's two distinguished speakers, warm welcome. Young members are nowadays, young member has been the key stakeholders of the profession.
they are occupying major stake and number of in the number also young members are increasing day by day. So to mold them and to give them vision and to guide them, such types of series are very important. And for this purpose, CA Saket sir and Jiten sir had taken a very wonderful step in this direction, and I congratulate them for taking these steps. With this, I assure you that today's session will be very interesting and will be value addition to all the members. With this, I hand over back to the Amay. Over to you, Amay. Yeah, thank you so much, sir. Friends, we have in this session CA Anil Bhandari, sir, Central Council member, to guide us as a keynote speaker. And now I would like to call upon Ms. Ravina Taide to introduce CA Anil Bhandari, sir. Very good morning, all. Am I audible? Yes, Ravina. It is my opportunity to introduce the dynamic person, CA Anil Bhandari, sir. So, is a Bachelor of Commerce from the Nasimonji College, a premier commerce institution in Mumbai, India, and is also a fellow member of the ICAI, fellow member of the Institute of Cost Works Accountants of India, member of the Association of Certified Information System Auditors, that is CISA. He has been awarded the Diploma in Information System Audit, DISA, by the ICAI, member of the Institute of Internal Auditors in Corporation, Florida, IIA, and certified internal auditor. So they successfully completed the internal audit for internal quality assessment validation training, that is a quality assurance by IIA. So commenced his career with FICOM, a consulting company offering services in corporate finance, and as project management and in management consulting. He concluded several deals for clients in industries like engineering, chemicals, commodities, technology, healthcare, defense, amongst others. Sir has been inducted on the board on the directors of FICOM. Having started practice in 1998 in the emerging field of management audit, system audits, and assurance services, he has gained substantial knowledge in information risk management, internal audit, corporate governance, compliances to Clause 49, and other regulatory acts. Sir heads the assurance service divisions of the firm. He deals with all aspects of general client business with a specific responsibility of risk management, internal audit, and information risk management, that is system audit. Besides this, he holds the additional responsibility of heading the operations of the firm in United Kingdom, which encompasses consulting for many high-profile organizations. With strong domain knowledge in banking, telecommunication, financial services, technology, and manufacturing industries, he heads client relationship for various companies, which is Reserve Bank of India, ICICI Bank Limited, Kotak Mahindra Bank, IndusInd Bank, Bank of Rajasthan, Andhra Bank, and many more. Anil Bhandari sir provides independent advisory to regulatory organizations like TRAI, metering and billing system audits, Reserve Bank of India. He further works closely with other regulatory bodies and institutions in topics related to corporate governance. Sir is immediate past president of IIA India and an elected member of chairman of ICAI, that is WIIC, for the year 2014-15. During his current tenure, he is also on various committees of WIIC of ICAI. He is an organizer member of Bharat Vikas Parishad, an NGO with more than 1,400 branches all across India. Sir has been a faculty of ICAI for lectures on internal audit, management audits, and information system audits. Sir had the opportunity to speak at various seminars organized by ICAI, Institute of Internal Audit, Information System Audits, and Control Association, and other organizations on topics related to internal audit, information risk management, and consulting. It is my privilege to introduce you, sir, and we welcome you. Thank you. Thank you, everybody. And a very good morning first to Nagpur and all the members who are attending this program. Congratulations, Saket and Jiten, for, I think, thinking through new ways of engaging with your members. And of course, then passing on this important information about how do they even open up their mind. So I think the tagline that I had kept when I was the chairman of the Western region was think beyond imagination. And I think what you're doing at the branch is thinking beyond
well, I wouldn't say at this point in time imagination, but I think it is a step one in terms of thinking beyond what is routine and letting people understand, and especially the young and the dynamic chartered accountants understand that the world does not revolve in and around auditing and accounting. And which is so important today because I think, again, the only lecture that I used to take all across the country was that audit and accounting is a dying practice. Well, I don't want to come on the platform and tell all my young chartered accountants that audit and accounting is likely to die. But what I mean is it is completely going to change 360 degrees, which I have been, I think, passing a message at least for the last 6 or 7 years that I can remember. And we are facing the reality in some or the other form. So think beyond imagination and rise above the ordinary. It's very important as a chartered accountant, as anybody, to actually start your focus from having a vision which is much larger, much bigger, and maybe not necessarily, it could be in the mainstream of work also. But 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 if you want to ensure that you have an opportunity to accelerate in your life a little faster, it is always interesting to identify a new challenge, always interesting to identify a new problem, and always interesting to provide solutions to new set of challenges because people will walk to your doors a little faster. I'm not saying that you cannot think beyond imagination in audit and accounting. Of course, let me start with telling you that you can actually imagine beyond imagination in audit and accounting because fundamentally, if everybody is coming on a platform and telling you that it's likely to change, who is this young dynamic chartered accountant that we have in the forum today? And I see several of you attending this program willing to take that risk to think through what is likely to change in the near future, short term and long term. Let me let me break this problem of audit and accounting first, because that's where our mind goes. How are you anticipating an accounting system to happen? I was just sitting with one of our chartered accountants yesterday and discussing and debating about a very small issue about TDS. Yeah, very small issue about TDS, which says that you need to deduct TDS on a particular transaction under a particular circumstances. But interestingly, the company was a new age company. The companies are the kinds of wallets where money comes in, money goes out. What is the ramification of TDS? The companies are the kinds that when you sell something on Amazon, Amazon already deducts 30% of it and pays you the difference. What do you do with the basic 30%? The challenge was what happens when you buy a software on the internet, for example. So when I go to internet today, we easily swipe our card and we buy our software. But people don't realize that there are ramifications of FEMA, the ramifications of TDS here as well. Right. If there are small amounts, it just doesn't matter. But if the amounts get into 1 crore, 2 crore, 5 crores, 10 crores, and the companies become larger, it starts to matter. Now, the problem statement is very simple. What do you do about TDS in all those circumstances? The second problem, I called up a very good colleague of mine, MP Vijay Kumar, and I asked him that MPV, a very simple transaction about TDS, but I'm not sure what the auditing and the accounting standards say on these subjects. So he said, accounting simply says you account for what you have to, and if it's a full amount, you don't have to bother about the TDS. But somewhere in the accounting standard, it said that the auditors also have to keenly follow the legal and the regulatory requirements of the country, which means the auditor is hit by the provision that it has to ensure something like this. Now, why am I taking you towards this journey of TDS when we're talking about new age chartered accountancy? I'm saying, look at this as a problem. This problem is there all across the country. This problem is there all across the world. And the problem is the same. You have to put an opinion when to do a TDS, in which kind of transactions to do a TDS. But the number of transactions and the variables are only 10, 20, 30, 40. There cannot be more than 40 variables. Why can't our accounting solution actually mandated to deduct a TDS
when an entry like this is coming into the accounting system. Is that too big a challenge? I don't think it is too big a challenge. So while we are debating this today, we may feel that no, let somebody take a call, let somebody take an opinion about it. Just doesn't matter. In the world, you need to simplify things. I am expecting accounting solutions to be able to take these calls for you in the next maybe just about 2 years. I repeat, in the next maybe just about 2 years. So if the accounting system is taking a call about exactly the GSTs to be done, exactly the TDS is to be done, all that you do in a transaction, what is left of an accounting standard? Only logics are left in an accounting standard, right? And if these are left in an accounting standards, what makes an auditing software not being able to audit a transaction or like all of these transactions? Now, anybody sitting in this forum, if he or she wants to think through a little differently, but auditing and accounting is a strength that you have, I'm saying, why don't you participate in killing audit and accounting? Again, by killing, I don't mean killing it literally. By killing, I mean being the change and being part of the change and being part of the system which is likely to change in the future. And believe me, if anybody on this forum today has any strength in audit and accounting, I invite you, because I need at least 40 such young chartered accountants thinking through very objectively, very logically, breaking the problem down and being able to provide solutions to it. So I am talking to you, friends, on a basic audit and accounting problem. If you solve this problem, I repeat, if you solve this problem, if you automate this problem, if you automate the solution, you know what the market is worth? The market is worth billions of dollars. I repeat, it's worth billions of dollars. And here we are thinking, can we get a job in auditing accounting for maybe 6 lakh rupees a year? Guys, I better go hungry than rather join a job for 6 lakh rupees a year. Yeah, we better go hungry. Yeah, we are chartered accountants. Why do we even want to do something like this? Correct. So I started with a very basic subject of TDS entries. When I was in college, it'll take maybe 5 or 6 minutes more. When I was in college and I was studying in my last 2 semesters, which was the SY BCom and TY BCom, I started to think through what is it that what I'm going to do after I become a BCom, for example. I did my cost accountancy and chartered accountancy because of the herd problem. You know, everybody was doing Nursimonji College. Everybody did chartered accountants. So without even applying my mind, right, I just went in and did chartered accountancy. And of course, maybe because our surrounding was such. But I was trying to think through, I did not have either a single book or a website or a mentor at that point in time to try and tell me what happens if I do chartered accountancy. What are the paths that I can follow? What happens when I do an MBA? What happens when I do an engineering, for example? Very difficult to find mentors to catch your hand and probably tell you, or very difficult to find an opportunity for somebody to talk to you. And I may not even want to do it. When I close my eyes, probably, I don't know, I wanted to ask Sharvari that what made her get into this profession? Maybe because when she got up in the morning and when she closes her eyes, the first thing that she would think through is maybe being very creative, right? Or maybe doing some aspect which has nothing to do with chartered accountancy. So I started to think, why don't I solve the problem of all the young students like me? So I went across all the classes in the city of Mumbai. I went to all the classes and I asked them, what do you tell students? They said, no, we don't tell them. We just give them chartered accountants from here, or we make them MBAs from here, because that's a straight line thinking. And I started to actually convert all of those thoughts in form of a book, which I wanted to publish and so on. So I started to think through entrepreneurship. Very small problem, but the idea is, can you find a small solution to a small problem? I, in fact, thought through something like a practo at that point in time, because I felt that there was no connection between doctors and the end consumers, people like us. We are not even patients today, but there is no connect. For example, somebody told me you can't do it.
because my friend, you're not a doctor. You're only a BCom guy trying to become a chartered accountant, right? Maybe it was too early for me. Maybe I was too young. I didn't realize that it doesn't matter. You know, a chartered accountant could have actually tried and executed something like this. So the first lesson that I learned without having done anything, without having even understood things, and my projects actually not going off the table was, it actually doesn't matter whether you're a chartered accountant, whether you're an engineer, whether you're a science graduate or a commerce graduate. What matters is, do you have the ability to think through a problem first? Do you recognize the problem first? And if you recognize the problem, do you have an ability to think through a solution then? If you have ability to think through a solution, you can hire doctors, you can hire academicians. If you don't have money, you can become friends with them, make partners with them, and so on and so forth. So what I'm trying to impress upon you is, I'm trying to go beyond your topic, which I'm sure the young two chartered accountants would definitely take you through the journey. I'm first asking you to scratch your heads. I'm asking you to try and think through a problem, and I'm asking you to think through a solution. And sometimes when you find a solution in a smaller problem, the market is actually worldwide market. It is no longer an India market. Coming to what is finally available during these times that we are living in, right? An investment opportunity or trying to do fintech opportunity in anything to do with finance or getting into media and entertainment. And I must tell you the success again, which is closely related to my heart. One of the chartered accountants came from Interior Maharashtra, my office, and he said, "Mr. Bhandari, I want to work with you." So I said, "You seem to be a very bright young chartered accountant, but what is it that you would want to do?" He said, "I could do funding. I could look at maybe IBC." I said, "No. Would you want to work with me on media and entertainment, for example? New vertical. We wanted to get into media and entertainment. Why? Because not too many chartered accountants were doing anything in media and entertainment." He said, "I don't understand anything about it." I said, "Doesn't matter. For 1 year, you go hungry and I hungry. But let's try and see if we can develop a vertical around it." Today, I'm happy to let you know, guys, that we have got 40 of the biggest logos in the media and entertainment across the world. And we are doing at least 70 to 80 projects and a team size of almost 75 to 80 just in 3 years' time. Just because we thought, let's try and do something interesting. And the interesting is, every day the team actually has fun on the sets, behind the sets, everything that a media and entertainment company does, any project that they do, they completely think very differently. Nobody is even thinking like a chartered accountant. Now, then why chartered accountancy is also important? Because you're all chartered accountants. I believe the chartered accountancy gives you the ability of being patient. Number one, have perseverance. Number two, and number three, which is again very important, your ability to think through different aspects, financial management, accounting, auditing, legal. It does make up your mind, giving you an idea and focus around different aspects. And the last that it teaches you to do, sit in the chair and do a lot of hard work, or maybe go out in the market and do a lot of hard work. So I'm really encouraged by the fact that you have two young chartered accountants on the table today here, Jiten. And I'm sure when you're going to talk to them, it's going to bring to light a lot of things as to why they actually wanted to do what they wanted to do. And what is it that made them do what they want to do? I want to only end this by one question to all the members who are attending here today on the table. Please get up in the morning tomorrow. Maybe not today, Sunday is a bad day. Please get up in the morning tomorrow on a Monday morning. And when you open your eyes, the first thing that comes to your mind is what you want to do, right? That is number one. Number two, get up in the morning and try and ask yourself, what is your inner strength? Am I a person who can easily talk to people, right? Am I a person who can easily pick up the phone and talk to unknown people, for example? Am I a person who's logical and can break the problems and find small solutions? What kind of a person you are? Am I a person who understands mathematics very well, for example? You need to categorize yourself in these aspects. Find your strength around it. Believe me, the moment you do this,
the moment you do this, you will find yourself a little closer to what you would really want to do in life. And the moment you are able to do that, there are like 500 opportunities available. Investment is a huge opportunity. Breaking investment into 100 pieces is a huge opportunity. VFX is a fantastic opportunity. Breaking that into 100 pieces is a fantastic opportunity. Creating education material using the ability to do and create cartoons and stories is a fantastic opportunity. Any chartered accountant who can just sit and write a script of how do I teach people is a fantastic opportunity. Convert that script into two people talking is a fantastic opportunity. I'm saying these are not only fantastic, they are $1 billion worth of opportunities. Ability to put a little code in data analytics is a fantastic opportunity. Ability to re-visualize accounting and auditing is a fantastic opportunity. And I can go endless and I can keep talking about it. But anyway, I think thank you so much, Nagpur, for first putting up a very interesting fireside chat. You should do this and talk to people who are doing something new in life, why they wanted to pick it up, what are they doing, what is the growth path that they feel is likely to happen. Because I think we should not only create chartered accountants as an institute, we should create the next generation chartered accountants within this institute. And I think you all play a fantastic role. So thank you, Saket and Jiten, for bringing up this, and the WICASA team for also helping across and bringing out young chartered accountants to probably come for this. And Rishikesh, thank you. You being in Satara, thinking through emerging areas is very interesting, because people can actually sit in Satara and deliver in Amazon, for example, or US, for example, and it just doesn't matter where you are. So congratulations, and I'm sure all of you are going to have a fantastic time. Thank you, Jiten. Thank you. Thank you so much, Anil sir. You are definitely an inspiration to all the young members and budding chartered accountants like me. And very well said that technology is the enabler of everything, and technology is the future. And CAs are meant to be the solution providers, and this technology is definitely a medium through which we can be the solution providers. So thank you, sir, for your presence and the wonderful address. Thank you so much. No, pleasure is mine. Yeah. Thank you. I also recognize the presence of CA Sanjay Agrawal sir, Secretary Nagpur branch of ICAI, and CA Akshay Gulane sir, Treasurer Nagpur branch of ICAI. Yeah, taking up the session further, I would now like to request Radhika Taneja to introduce our dynamic speaker, CA Sharvari Watak ma'am. Over to you, Radhika. Thank you so much, Anil. Am I audible? Yeah. A very good morning to one and all. It is my privilege to introduce to you all CA Sharvari Watak ma'am, a very dynamic person, as I can read from her profile, in fact. Ma'am is a qualified chartered accountant since the year 2014. Ma'am has done her articleship from CA Rajiv Meghal sir and has practiced in indirect taxes under CA Ajit Gokan sir and in CA CR Sagdev company. Ma'am has started a practice in Mumbai in the year 2015. Ma'am has produced the first VFX film in Nagpur in the year 2015 under home production Dusk Entertainment. She has ventured in post-production in 2016 and worked in around 75 films till date, including Pushpa, Talaiva, Bahubali, and many other domestically as well as many VFX projects internationally. Ma'am and their company have branches in Noida, Chennai, and Bangalore for VFX outsourced departments. She is one of the top 5 women entrepreneurs in post-production in Mumbai. Ma'am's company is now venturing into fledged production from the year 2023 for the digital domain. Ma'am has also formed the NGO Dusk Welfare Foundation to work towards producing healthy living ideas. It is our honor and privilege to have you here, ma'am. Thank you so much, Radhika. Ma'am, I welcome you on the behalf of Nagpur Branch Forum. I will now call upon Ms. Pooja Khatrani to introduce our second speaker, CA Nitesh Jagwani, sir. Over to you, Pooja. Thank you so much. A very good morning to everyone.
It's my privilege to introduce CA Nitesh Jagwani, sir. Sir has qualified as a chartered accountant in November 2020 and is a ranker in CS. He has been working as an investment banking analyst in JP Morgan Chase and Company. He is involved in debt capital markets, working on some of the biggest deals, including acquisition financing of a transaction combining number 3 and number 4 biggest gaming companies in the world, and other buybacks and debt financing. He has also worked with PwC Mumbai during his articleship period and has handled various statutory audits of listed companies and global conglomerates. He has also worked in finance and taxation in Nagpur. On the behalf of Nagpur branch of WIRC of ICAI, we really grace your presence in this webinar on Fireside Chat with New Age Professionals. We welcome you, sir. Thank you. Yeah, thank you so much, Pooja. Friends, we are very eager to listen to our dynamic speakers now, and I would now like to hand over the proceedings to CA Jiten Saglani, sir. And before that, let's move to a fireplace where we can have a chit chat, and we have the dynamic speaker CA Sharvari Watak ma'am and CA Nitesh Jagwani sir with us. So let's move to the fireplace. So, Amay, shall we take this forward? Yeah, just a couple of minutes, sir. Just a minute. Yeah. So while you are doing it, and while you are, say, preparing the settings for the audiovisual impact of the session, I would like to thank C. Anil Bhandari ji for gracing and inaugurating this fireside chat series. It was a wonderful couple of minutes from his side. Despite he had a sore throat and doctor has not allowed him to speak for longer times. So, despite the vocal cords not working well with him, still he has been here and he had graced this occasion. So, thank you so much, Anil sir. And I wish to also recognize the presence of my co-committee members, CA Sanjay Agarwal ji and CA Akshay Gulane. Both of them had spared the time this Sunday morning. Thank you so much to the team Nagpur, because this program on this Sunday morning, which is actually very freezy now today in Nagpur, in past couple of days, it had been so chilling. And someone posted yesterday, it was a very nice message कि भगवान ने अपना फ्रिज का दरवाजा शायद खुला छोड़ दिया है, इसलिए नागपुर में ठंडी बहुत बढ़ गई है. So I think that is the precise reason, if not. So I think let's take it in a better way. And I think Amay is putting on the fireside chat for us, the visual graphics. But before that, a couple of questions while he takes this forward. So, as Anilji rightly stated, that we as an institute should create new age professionals, and we want people to think beyond, and that to beyond the imagination part. And he has also listed certain things that we should do every morning. I think that was a very nice thing coming from his side. Now, yeah, so this is the fireside chat, and I think everyone is there. So it looks wonderful. Sharvari, do you want to comment on that? I think you're on mute. So, Amay, you can just put on the mics of Nitesh and Sharvari, both. Yeah, I just unmuted. Yeah, perfect. Yeah. So, in the literal meaning of fireside chat. So we are trying to do it the best things that we can do with the available say technology, and let's have it in the best possible manner.
Yeah, perfect, Amir, perfect. I think you can add both the speakers now here. Yeah, Saket sir is also there, so you can add him on the screen as well. He's actually traveling, so the reason we missed his words this Sunday morning was his nice words. He speaks very nicely, but this Sunday morning, due to the travel that he's doing, he's available virtually, but still not able to speak because there is a lot of noise in the background. So he avoided talking to members here. But any which ways, I think Saket sir, his spirited presence is important. Yeah. So perfect, perfect, perfect. Now, Amey and Rishikesh, you both can stay there, and even Saket sir, Sanjay sir, Akshay sir, if they are available, their videos on, we can all be here. Sure, sir. Perfect, perfect, perfect. So let us start with the session, the core things that we wanted to do. And my question goes to both of you. Like, सीए तो कर लिया आपने, ठीक है, राइट? अब सीए बन भी गए और फिर ये करियर में आप पहुंचे, यू लैंडेड अप इन दिस करियर. So first of all, the first question goes to you is how your life has changed, becoming a chartered accountant and then getting into this career stream. How has it actually impacted when you talk about this career stream? And I wish to talk to both of them. So whichever, say, whoever takes this forward, like Nitesh or Sharvari, it's up to you. Sharvari first because ladies first as always. So Sharvari first. Yeah. फर्स्टली सीए तो कर लिया से ज्यादा सीए तो हो गया मेरे केस में. True, very true. तो हो गया because it itself is a privilege to have that esteemed degree with you. तो लाइफ तो सीए की वजह से, यानी ये फील्ड भी में जो एक ग्रेस मुझे मिला है पहले दिन से, whenever I have stepped out being an entrepreneur in entertainment industry, उसका वजन जो है वो सबसे पहले बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उस वजह से आया है. बिकॉज वो अज्यूम्ड है कि हम लोग उतना हार्डवर्क, उतना परसिवरेंस, उतना डेडिकेशन लेके चले हैं तभी वो डिग्री हमें मिली है. तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब भी, यानी उस वजह से वो एक बहुत बड़े लाइफ चेंजिंग ऑलरेडी रोल हो चुकी हुई होती है चीजें हमारे लिए. फिर डिपेंड करता है क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आई, क्या हमने लिया, क्या हमने छोड़ दिया. तो वो जो, और सबसे पहले उसके पीछे एक बहुत बड़ा वो होता है जब आप आर्टिकलशिप करते हैं तो उसमें 3-4 साल हमारा लाइफ खत्म हो चुका होता है. तो हमको वो मालूम है कि वो प्रोसेस क्या होता है. वी आर ऑलरेडी, वो हमें इम्बाइब किया जाता है इस कोर्स में, हाउ टू फेस योर स्ट्रगल्स, हाउ टू यू नो, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, एग्जाम की छुट्टियां नहीं मिल रही है, काम बहुत है, ऑडिट्स करने हैं, तो यू वी ऑलरेडी नो हाउ टू जगल बिटवीन द थिंग्स. तो जो फील्ड स्पेशली मैंने चूज की है उसमें मेरे आर्टिकलशिप का, मेरे डिग्री का बहुत बड़ा रोल रहा है टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मैनर, उसको प्रॉपर एक प्लान ऑफ एक्शन में डाल के उसका रिजल्ट ओरिएंटेशन में लाना. तो दीज थिंग्स हैव रियली हेल्प्ड मी आउट in a major way, in a major way. And how did you choose this career then? I think I'll actually ask this later, but then I'll ask Nitesh first. कि Nitesh, CA तो बन गए, अब उसके बाद में कैसे चूज किया, करियर कैसे चूज किया, and how did you land up doing this right now? Yeah. So basically, first of all, तो मैं भी यही बोलूंगा कि CA तो बन गए, CA हो गया, that's a big thing. And अनिल भंडारी सर के सारे वर्ड्स के साथ I would like actually relate regarding the patience thing first of all, because हम लोगों का was May 20 attempt originally that got postponed to November 20 and 3-4 बार एग्जाम पोस्टपोनमेंट हुआ था. तो क्रेजी लेवल ऑफ पेशेंस टेस्ट हुआ है. उसके बाद लाइक अब तुमसे कुछ भी करा लो, पेशेंस टेस्ट में तो मैं जीतने वाला हूँ, कुछ भी कर लो, स्टाइप एंड ऑल. उसके अलावा ऑब्वियसली द डिसिप्लिन एंड ऑल. आई मीन अभी भी मैं अगर वो डेज इमेजिन करूँ, व्हेन आई एम वेकिंग अप 5 AM in the morning, रनिंग टू द क्लास, देन गोइंग फॉर माय ऑफिस स्टफ, देन फिर शाम को क्लास, एंड उसके बाद अगेन हैविंग द एनर्जी टू 2-3 hours डू समथिंग एट द नाइट एंड देन स्लीप. तो एक्चुअली CA course has turned me into a different kind of individual. That is like amazing stuff. And if I tell you about this, how did I landed up in this role, I'll go in detail on the stuff and all. But मेरा ऐसा था कि in the articleship phase also, I wanted to explore as much as I can as possible and not just be restricted to one field and then going forward. So I worked on a lot of things, audit, tax, be it project financing, be it litigations as well.
I was lucky to get a chance to do all these things in my 3 year stint. And then I realized कि बचपन से ही वैसे भी my number crunching and numbers में I was very interested. And when I got to work in the project financing kind of stuff in my articleship period, then I realized कि this thing is interesting, dude. I mean, compliance में also like clients love doing this, but project financing में जो attractiveness है and the number crunching वाला thing है, that is on another level. Then I decided कि yeah, I need to like do something to move into these kind of fields. And then I tried foring, and that's a long story. I'll be telling it ahead. And then I actually landed in this profession. I'll tell the detailed story later as well. Perfect, perfect. We definitely want to listen to your stories because we are here to say actually decode what you had actually faced, and now you are there. So we want to understand your stories for sure. Has it actually added value being a chartered accountant, and how? Because अगर आप सीए नहीं करते और अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते तो देयर आर मेनी वेज टू डू इट. You can do that through other routes as well. Even Sharvari will agree to this that VFX is such an industry wherein technical people are required. Chartered accountants का शायद ही कोई imagine कर सकता है कि chartered accountant वहाँ पे VFX production में है. So has it actually added value? Over to Sharvari or Nitesh, whoever wants to speak. I think Nitesh should go first. So story continue होगी हमारी. Sure. So basically, as you rightly said, कि investment banking में सिर्फ chartered accountants नहीं, engineers and MBAs भी बहुत जाते हैं, and that's a major factor I'll be talking today as well. कि the opportunities the CAs are getting in investment banking as compared to the engineers and MBAs. So basically, IB and all the core finance jobs में, if you know, कि starting से there's this structured approach कि the companies go into all the big colleges, engineering colleges, and they just hire from there and stuff like that. And if you like listen from me as well, when I qualified, I started talking out to people, reaching out to people, all of the seniors who are like older 3 or 4 years to me, they had to struggle a lot to get these kind of jobs. For example, एक से मैं I was talking to a senior, and he started with his career with equity research in Edelweiss. So when I like had a word with him, like how he got it, crazy level of struggle. 3-4 महीने तक he was searching for things, कुछ नहीं मिल रहा था. Then finally एक internship जाके मिला, बहुत ज़्यादा referencing, और उसके बाद he got into something. Then there was one more senior, qualified CA, first time in everything. He was also sure कि मुझे करना तो IB है, फाइनेंस में ही जाना है, मेरे को ऑडिट टैक्स वगैरह सब में नहीं करना है, भले मैं as अनिल सर said मैं हंगरी बैठूंगा, बट करना तो वही करना है. तो he also was in a similar situation. He waited for 6 months till he gets something he wants, and then he got into Nomura. That's also a big investment banking firm, and then he works there. So basically, yeah, CAs को अभी opportunities मिलते जा रही है, but telling you the importance of CA, since I'm working now, I'll tell you. So since I'm working with a mix of cohorts, for there are MBA graduates here, SRCC graduates, engineers as well, and trust me, the importance and the skill that I am experiencing working with them is on another level. जैसे अनिल sir also said, you get to think on a diverse basis, be it finance also, be it थोड़ा बहुत law interpretation also, be it accounts and all as well. So for example, I was working on a deal recently, and that we have to read about the credit agreements of the companies to figure out what are the restrictions that is there, how much debt we can raise, how much like we can twist things and stuff. So for there was a complex agreement and something, and one of my seniors, 1.5 years in my same team, she took a entire day to do that stuff, like analyzing things and stuff. And next time मेरे पास आया था, and I did it like in 2-3 hours. Then I realized, dude, yeah, मेरा law पढ़ना बहुत ज़्यादा सफल हो रहा है यहाँ पे. So basically, yeah, obviously IB के लिए there are opportunities from other as well, but getting it after being a CA gives you an edge. Trust me that it gives you a great edge over others. बहुत encouraging लगा आपसे सुन के, because बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा क्यों करना है हमको ये सब, why we should do it. But I think ये सब जो चीजें हम जब सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तब समझ में आता है कि ये करने से कितना फायदा होता है. शर्वरी, नाउ आपके लिए, बिकॉज आपका फील्ड तो एकदम अलग है, एंड we have someone like you, and I think सब लोग सुनना चाहते हैं डेफिनेटली आपसे, बिकॉज नितेश का तो सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, बट आपसे रिलेट करना थोड़ा मुश्किल है. सो प्लीज. बिल्कुल. एक्चुअली हमारा फील्ड ऐसा है कि जहाँ पे एजुकेशन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है. It's all a very technical field. और अभी right now we have around 60-65 people working in Mumbai for us. And trust me when I say this, उसमें से 40 people, means 80% of the staff of mine is 12th pass, first year pass, second year pass. बहुत हुआ तो dropouts हैं बहुत सारे तो, but they earn
5 lakhs, 6 lakhs, 10 lakhs from us annually. So मेरे फील्ड में तो डेफिनेटली एजुकेशन का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, बट हाउ माई डिग्री हैज गिवन एन एज टू मी इज, सबसे पहले तो हमें जो एक स्ट्रक्चरिंग सिखाया जाता है कि किसी भी काम को करने का स्ट्रक्चर, और वो हालांकि हर फील्ड में हर इसमें सिखाया जाता है, बट स्पेसिफिकली हमारे इसमें ज्यादा इसलिए क्योंकि हम बहुत सारे जोन के लोगों से मिलते हैं. व्हेन वी डू आर्टिकलशिप ऑल्सो, हम लोग एफएमसीजी वालों के लिए भी काम करते हैं, हम लोग बैंक्स के लिए भी काम करते हैं, तो वी गो थ्रू ऑल द स्ट्रक्चर्स व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड. तो व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ आई फेल्ट एन इम्पोर्टेंस कि ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है, and my degree and my experience would definitely give an edge to this industry as well, कि वो मेरा ऑडिटिंग से कोई संबंध नहीं रहा है बहुत ज्यादा. आई हैवंट प्रैक्टिस्ड इन ऑडिट सेगमेंट एट ऑल. लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो आई अंडरस्टैंड कि मैं ऑडिट में जो पढ़ी हूँ, जो मैं इसका में पढ़ी हूँ, फॉर दैट मैटर जो सब्जेक्ट हमारे लिए बस ऐसा होता है कि एटलीस्ट फॉर अस कि बस पढ़ना है भाई, पासिंग मार्क्स चाहिए, बट दैट दीज टू सब्जेक्ट्स हैव गिवन अ वेरी मच एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट दिया है इस फील्ड के लिए मुझे, क्योंकि जितना मैंने इंटरनल ऑडिटिंग प्रोसेस मेरा स्ट्रांग रखा है, उतना मुझे सक्सेस रेट मेरे बिजनेस में मिला है. जिन ऑर्गेनाइजेशंस में एसोसिएट रही हूँ मैं, उनको भी बहुत बड़े एज मिले हैं उसमें. तो दिस डेफिनेटली यानी उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार ये सीए होके ये ऐसा काम कैसे कर पाएंगे. तो कपल ऑफ मंथ्स दे यूज्ड टू स्टेयर मी व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस कि ये क्या कर लेंगे जो हम नहीं कर सकते, वो ऐसा क्या है जो ये कर लेंगे. बट वो जो स्ट्रक्चर आता है ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एक इनसाइट की वजह से, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, और उसका बेनिफिट्स उन लोगों ने भी लिए हैं एज एन एम्प्लॉय. So I started as an employee, and not as an employee as such, but I started working for some organizations in this. फिर आई कम टू नो, मुझे बहुत ऑफर्स आने लगे कि आप हमारे लिए ये डिजाइन कर दीजिए, हम ये कर लेंगे. मेरा पहचान अच्छा हुआ तो मतलब यू विल बी सरप्राइज, आई एम वन ऑफ द मेन मार्केटिंग पर्सन्स इन दिस फील्ड ऑफ वीएफएक्स. तो दैट जर्नी हैज बीन वेरी कमेंडेबल, एंड उसमें सीए का एक जो परसिवरेंस हमें सिखाया जाता है, जो एक इस पूरे प्रोसेस में आता है, जो सर ने भी बोला कि आप उठ के जो बोलते हैं कि आज क्या करना है, तो हमारी फील्ड में रोज वो उठ के पहले आधे घंटे का एनालिसिस जरूरी है कि आज क्या करना है. तो दैट गिव्स अ एक फन ऐड हो जाता है, उसमें फन क्वेश्चन ऐड हो जाता है. ग्रेट. आई थिंक दोनों की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें तो डेफिनेटली करने जैसी है, और शर्वरी का एरिया तो डेफिनेटली करने जैसा है. क्योंकि मैं जो नितेश कर रहा है उस लाइन में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पर्सनली कर रहा हूँ, बट अब ऐसा लगता है कि इस साइड पे भी जंप करके कुछ देखना चाहिए. एंड शर्वरी, अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज देने की बात करो तो वी हैव मेंबर्स एट नागपुर, स्टूडेंट्स एट नागपुर हु कैन एक्चुअली जॉइन यू. तो डेफिनेटली माय प्लेजर सर. मेंबर्स के लिए ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी का भी एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है. सो लेट्स ब्रेक दिस आउट. आगे बढ़ते हैं. The next question to both of you is, how did you fall into this career option? Like, how did you get into it? Accidentally हो गया कि purposefully किया? Because बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ जम नहीं रहा है, कुछ आ गया सामने, अब उसको उठा लिया, करना शुरू किया, फिर उसमें मजा आने लग गया, फिर उसको ही करते चले गए. So was it that way, or was it the other way around कि purposefully बस यही करना था और इसी को पकड़ के इसमें ही आगे बढ़ना था, इसलिए आगे बढ़े? So, शर्वरी, आप कंटिन्यू करिए so that the story. एक्चुअली मेरा बहुत हार्डकोर टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है इस फील्ड में, लेकिन समेशन करेंगे तो ये एक्सीडेंटली हुआ है मेरे साथ, बिकॉज आई वाज नेवर इनटू अ जॉब सेक्टर. मैंने हमेशा प्रैक्टिस ओरिएंटेशन ही मेरा रहा है. आई कैन नॉट लुक आउट फॉर पर एनम्स, वो थोड़ा मेरा जोन नहीं था कभी भी. तो मेरे लिए हमेशा ये चैलेंज रहता था कि करना क्या है, बिकॉज ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, वो टिपिकल प्रैक्टिसेस में मैं बहुत ज्यादा रूटीन में अपने आप को ढाल नहीं पा रही थी. इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी. तो व्हेन आई ज्वाइंड शर्मा मुकेवार एज पार्टनर, तो मैंने कुछ टाइम बाद उन्हें बोला, सर ये तो अभी हम सब कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, केसेस कर रहे हैं, असेसमेंट्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट? तो ही सेड, आप बताइए क्या कर सकते हैं. बोला लेट्स एक्सप्लोर मुंबई. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा फील्ड है जो यहाँ पे नागपुर में तो आई डोंट थिंक एनीबडी इज हार्डकोर डूइंग इट. So they seconded my idea. Then we started off in Mumbai, in Bandra, 2016 start में. Then things started falling into place. I got good clientele. I had मतलब expectations से कुछ ज्यादा अच्छा response हमें मिलने लगा.
Then there were few companies who were dealing into visual effects and productions, and they were accidentally from Nagpur only, the financiers. So they appointed me as statutory auditor initially. तो मुझे उनके इंटरनल सिस्टम्स में बहुत सारी गड़बड़ लगने लगी, सिंस दे वर नॉट सिटिंग देयर, इट वाज ऑल अदर पीपल हैंडलिंग देयर बिजनेसेस. तो वो चीजें मुझे जैसे जैसे ध्यान में आने लगी, आई हैड डिजाइन फॉर देम एन इंटरनल प्रोसेस सिस्टम कि आप इस तरह से काम करिए तो आप यहाँ बैठ के भी वहाँ का पूरा मॉनिटरिंग कर सकते हैं. तो दैट रियली वर्कड फॉर देम इन कपल ऑफ मंथ्स. जो लॉस मेकिंग था वो धीरे 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 दे गॉट एन आइडिया कि कहाँ हमारा ग्राफ जा रहा है. तो वन डे दैट फेलो टोल्ड मी, द ओनर, कि काम करिए ना, आप ही क्यों नहीं कर लेते हैं. एनी विच वेज आपका इन्वॉल्वमेंट काफी है यहाँ पे. एनी विच वेज वी आर गोइंग इनटू लॉस, एंड ही हैड इन्वेस्टेड अ ह्यूज सम ऑफ मनी दैट टाइम. तो वो एक सिक्योरिटी के हिसाब से, आप भी नागपुर के ही है, वो हिसाब से उन्होंने मुझे वहां पे एक उनका एक इंटरनल बंदा करके अपॉइंट किया था कि भाई आप. अब मैं वहां पे बहुत दिखती थी तो उनको लगता था भाई ये स्टूडियो मेरा है. जो लोग आते थे वहां पे, जो क्लाइंट्स आते थे, तो दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विथ मी. तो एक्सीडेंटली वो ऐसा हो गया कि मैं भूल गई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे यहाँ पे क्या काम करना है. तो दैट स्टार्टेड रोलिंग ऑन फॉर मी. तो क्लाइंट्स पहचान में होते गए, आई स्टार्टेड नोइंग द सिस्टम. फिर वीएफएक्स में हमारा फर्स्ट फिल्म हुआ कमांडो 2. इट वाज अ ह्यूज फिल्म, 1500 शॉट्स. तो वो कैसा होता गया, तो वो क्यूरोसिटी बढ़ती गई मेरी. जब जहाँ मेरी जरूरत नहीं भी थी तो भी आई स्टार्टेड सिटिंग देयर. बहुत सारी चीजें मुझे समझने लगी. फिर बोला यार ये एरिया ऐसा है जहाँ पे ये जो स्टूडियोज थे, जो अदर देन दोज हु आर मल्टीनेशनल्स, उनको वो प्रोसेसेस ही मालूम नहीं है. दे कुड उनका जितना कैपेसिटी उससे बहुत अच्छा काम वो कर सकते हैं. I started giving that kind of generations to them, report generations, internal audit processes. So they did very well in one and a half years. उनका टर्नओवर बहुत अच्छा हुआ, तो चीजें रोल होने लगी. फिर आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम आउटसाइड आल्सो, फ्रॉम रेड चिलीज, फ्रॉम वहाँ पे और भी जो इस स्ट्रेचर के स्टूडियोज हैं कि भाई आप आइए हमारा इंटरनल प्रोसेस सेट करके दीजिए कि हाउ थिंग्स शुड मूव इन, हाउ प्रोडक्शन रिपोर्ट शुड बी जनरेटेड. तो वो भी किया मैंने. बट फिर मैंने सोचा कि यार इतना अगर इम्पोर्टेंट है हमारा ये विजन, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विथ योरसेल्फ, देन व्हाई टू गिव सर्विस. वो मैं अभी भी करती हूँ, बट नाउ आई एम प्रोमिनेंटली इनटू माय ओन बिजनेस. दैट वे आई स्टार्टेड इन 2018 2019 बिगिनिंग में. एंड देन पहचान होती गई, चीजें बनती गई, कारवा बनता गया. इस तरह से we had started rolling. Actually, I felt very nice, like you added value through internal audit and internal process review was something very, it was very encouraging to hear that, because people out here feel that internal audit सिर्फ एक compliance activity है, बहुत सारे listed companies को करवाना होता है इसलिए करवाते हैं. But I personally feel that it is a lot of value add and you actually proved it. So it was amazing. जो आप पहले बोले ये चीजें मेरे थॉट प्रोसेस का भी पार्ट थी कि ऑडिट यानी अरे क्या करना है, कंप्लायंस है, हम पॉइंट्स निकालते हैं, वो उस पर डिस्कशन होता है, कुछ तो भी हो जाता है. बट उसका जो रियल क्रक्स ऑफ मैटर है वो बिजनेसेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो आज भी हम हमारे इसमें जब इंटरनल ऑडिट्स इज अ मैंडेटरी प्रोसेस की हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे डिलीवरेबल्स, हमारे प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, सब उस स्कैनर से डेफिनेटली जाते हैं. तो जो नॉर्मल लॉस में भी हम 10% पकड़ के चलते हैं, इट इज फॉर श्योर रिड्यूस टू 5%, 2% इन मेनी केसेस. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है. इफ यू रियली इम्प्लीमेंट इट वेरी स्मार्टली इनटू योर क्लाइंट बिजनेसेस, तो एक बहुत अच्छा फील्ड वो साबित हो सकता है. True, very true. Nitesh, taking this same question forward with you, how did you land up in your career? Was it accidental or purposeful? Yeah, so basically it was a purposeful only, because since starting only, as I mentioned, कि number crunching wise मेरा already थोड़ा सा था interest, but not the audit and वो वाला other stuff basically. तो as soon as we qualified CA, obviously पहले तो बहुत ही अलग feeling रहता है. उसके बाद then what next? उसके बाद we have to like एकदम से एक FOMO आने लगता है what to do next. लोगों के पहले से इंटरव्यू चालू हो जाते हैं. So then I started reaching out to people because I knew कि मुझे Big 4 में audit और tax और ये सब नहीं करना है, because I had an experience of it and I know कि this is not for me and stuff. Then basically this misconception जो मैं budding CS को भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक misconception बहुत बड़ा है कि IB finance related roles
are only reserved for the rankers or who have like qualified CFAs और जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रोफाइल अच्छा है and everything. Not the case. I am an example of it. मैंने भी रैंक के लिए ट्राई किया था but I didn't get it. But I am now working as a IB analyst there. So जैसा वही मैंने सीनियर से बात किया था तो सबका सुन के यही लगा I had to be prepared कि कितना चांसेस है मिलने का and something backup of if I am not getting something stuff like that. तो बहुत रहता है कि ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ नीश प्रोफाइल, टीम बहुत छोटी रहती है, ऑब्वियसली इट्स अ हाई पेइंग जॉब बट टीम्स बहुत छोटी छोटी होती है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नॉट ओनली द सीएस, एवरीवन वांट्स टू बी इन द आईबी in the finance stuff because of the attractiveness of the profession. So then I started talking out to people, reaching out to people ki kitna chances hai, how can I apply, and then I started applying with everywhere. I talked to a lot of people working in startups as a CA qualified, working in the MBBs and the consulting frames in JP Morgan B, equity research professions, and then I analyze like what is interesting to me. I'll also suggest the budding CAs, after you qualify, ऐसा रहता है कि बहुत लोग आर वेरी सॉर्टेड कि वी नीड टू डू दिस स्टफ, ये करना है, यहाँ जाना है, किसी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में जाना है, ऑल, बट कुछ ऐसे कैटेगरी भी होते हैं कि यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट टू डू एंड दैट्स टोटली ओके. आई वाज आल्सो वन ऑफ देम. आई वाज बी कंफ्यूज्ड कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट टू डू. वैसे ये था कि मुझे अपना कुछ स्टार्ट नहीं करना है, आई नीड टू मूव आउट, आई नीड टू एक्सप्लोर एंड देन आई विल थिंक ऑफ इट एट अ लेटर स्टेज. So basically I talked to a lot of people and then I decided कि yeah, this is actually interesting and I'm now going into the right path. Then obviously कंपटीशन बहुत था, तो उसके लिए देन आई ट्राइड रीचिंग आउट टू लॉट ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन. बहुत जगह पे ट्राई किया, बहुत जगह पे डिसअपॉइंटमेंट्स भी आए, बट फाइनली आई गॉट अ कॉल इन जेपी फॉर द इंटरव्यू. क्रेजी लेवल पे पढ़ाई किया उसके लिए, बहुत अच्छे से पढ़ा, इंटरव्यूज हुए एंड देन फाइनली आई क्वालिफाइड एंड आई लैंडेड इन दैट जॉब. सो बेसिकली ये, सो आई लाइक वांट टू लाइक से, जैसे मैं एक चीट कोड यूज करता हूँ इन लाइफ कि always contact your seniors and the experienced people to learn from their mistakes so that you don't commit them. So जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है, यू कैन थिंक ऑफ, डू नॉट हैव दैट प्रीकंसीव नोशन कि यार आईबी में मुझे नहीं मिलेगा, फाइनेंस में मुझे नहीं मिलेगा, ऑडिट टैक्स ही करना पड़ेगा, बिग फोर जाना पड़ेगा. कुछ भी नहीं है ऐसा. यू जस्ट नीड टू शोकेस योरसेल्फ, यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ एंड यू विल गेट देयर व्हाटएवर वेयरएवर यू वांट, एंड जस्ट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल. So it's rightly said that a good person is someone who learns from his own experiences, his own say journey. But a smarter one is one who learns from someone else. So I think you avoided those mistakes which your seniors, your mentors had avoided, rather committed, and you avoided those. So that was very nice. Now coming on to the other question, what skill sets do you require, and what do you advise basically to young professionals, as well as those who wish to do this at this age, like people like me are into middle ages. Now, if I want to do something of this sort, what is something that I should do as a skill set to acquire that skill set? So steps towards that. And Nitesh, if at all something you have in terms of sharing some PPT, some good pointers, I'll request you to please do that, because वो बहुत अच्छा ऐड वैल्यू करेगा. और इवन शर्वरी, अगर आप आपकी कोई क्लिप ही शेयर कर दो तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन. So Nitesh, I'll request you to elaborate on this, please. Yeah, so I just prepared 2 basic slides to give you a brief about the IB related bifurcations in case somebody is not sure about what and what is there inside that. So I'll just share my screen and present that to you. Just a sec. Let me know if you guys can see my screen. Yeah, so basically I just wanted to give people a brief if they are not sure about what is investment banking and what is the difference between a normal bank and investment bank. So basically investment bankers are like work as a intermediate between those who have funds and those who want to invest, and as those who are in need of funds. So commercial banks, as we all know, deal with like small parties and small people, and investment bankers deal with the big parties, big transactions, handling complex transactions, helping them raise funds and working on the mergers and acquisitions. So basically, roughly there are like 4 categories of banks that we call like bulge bracket banks, that are like the global top banks giving all the services, be it M&A, equity, debt and stuff. Then as the hierarchy goes down, then there is specialization, like the regional boutique firms and the middle market banks. They will be specializing on a particular thing, for example, tech related deals or some IPO related or equity related stuff, basically. Then if I say, yes, the screen is stuck. Yeah.
So further, investment banking is classified into like 2 or 3 categories. First is obviously the mergers and acquisition. For example, you heard like listen out of lot of deals. For example, Byju's acquired Akash recently, or something stuff like that. Yeah, Microsoft acquired Activision recently. So ये जो पूरा mergers and deals का काम होता है, पूरा investment banking firms के पास ही जाता है. They do it from the start, like evaluating the opportunities, evaluating the companies, then the valuation about them, due diligence, whether is it worth it or not, giving offers, counter offers, the funds, where we can get the funds from it, selling it to the investors, and finally closing a deal. It takes like almost like 6-9 months from the start to end of the deal. So basically, M&A is one of the fields where investment bankers work. And others is the capital markets, where we help companies to raise funds. And that could be done in 2 ways, either to the debt capital markets, where there is debt raising and debt restructuring, and even exit planning, so that they can raise funds to pay off their debts and stuff. Another is the equity capital markets, where related to IPOs, FPOs, and stuff like that. So basically, I just wanted to give a brief about the IB stuff, just so that it's clear. So getting back to your question, जैसे मैंने पहले भी बोला कि it's not like that कि आपके पास full on degrees and stuff and बड़े-बड़े MBAs और बड़े-बड़े tax MBAs होना is necessary to get these skills. But specific skills that I will talk about, if you want to make your career in finances, you should be very good about the things that are happening around yourself, be it the industry, sectors, industries का क्या effect हो रहा है, आपकी कौन से decision से क्या effect हो रहा है, आपके financials कैसे चल रहे हैं and all. For example, a budding CS के लिए I will also suggest that you can like guys focus on doing some courses related to financial modeling, be it valuation, be it doing some internships in some companies before getting that tag. So basically finance related stuff, and you have to be aware about what you are doing. Like audit भी हम ऐसा करते हैं कि at times we just do it कैसा कैसा ऊपर से देख लिया and खत्म कर लिया. But for example, if you are appearing for an interview and you have worked and audited that industry, and he comes up with a question, tell me this, there's the ratios of the industry, or how is the industry performing, what are the competitors, what are the benchmarks and stuff, and you will be stuck there. So basic thing is, whatever you are doing, do it in a detailed manner with understanding and analyzing purpose. So basically, as you said, कि अगर आप जैसे लोगों को भी इस टाइप के फील्ड या फंडरेजिंग में आना है, तो then you have to like do a lot of research work about how the company is, उसके क्या prospects हैं, market में क्या prospects चल रहे हैं, market में क्या rates चल रहे हैं, at what rate we can like raise funds for it, and then you have to network with people, and then you are there. I feel good. I think most of the budding chartered accountants who want to enter into this, they have got some bit of idea, if not entirely. But I think Nitesh would be kind to share his number, and if people wish to get in touch with him, they will definitely connect him and get the ideas. जो mistakes नितेश ने करी है वो आप ना करें, इसके लिए नितेश से definitely connect करें, right? Yeah. And now Sharvari, on to you. The same question to you. Like, what skill sets did you acquire? Because you belong to an entirely different field, and the field that you had chosen of late was entirely different. So, क्या skill sets आपने acquire करे? अगर इसमें से कोई अभी भी जाना चाहता है आपके field में, तो कैसे जाए? I think सबसे पहला जो Nitesh also said very correctly is analysis of any work, whatever you're doing, when you are into articleship mode, or whenever you're studying your course material, or when if you're doing job, or if you're in practice right now. हमारे लिए सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि we come across मतलब इतने सारे businesses का segments हम लोग देखते हैं. May it be high-end things like M&E, may it be just statutory audit. जो आपका analytical skill है वो हमारा प्रोफेशन वैसे भी एक एज देता है हमें डेवलप करने के लिए. तो आई थिंक अगर हम उसके लिए बहुत बहुत शिद्दत से उस पे काम करें कि हमारा एनालिटिकल स्किल डेवलप हो, तो हम ऐसे प्रोफेशन में हैं, हमारा प्रोफेशन अलाउ करता है कि आपको जहां भी फेंका जाए आप उसको you can grasp that thing and get the ball rolling for yourself. तो वो एज ना छोड़े जो आपको ऑलरेडी आपकी डिग्री दे रही है. आप आपके लिए उतना एक स्किल डेवलप करिए कि आप बहुत ज्यादा शार्प रहिए जब भी आप जो भी काम कर रहे हैं. नेटवर्क विद पीपल अराउंड कि जो लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, बी वेरी अवेयर. Like if I am in the entertainment industry also, in couple of years if I want to go for my IPO, I need to understand what exactly the process should be, what I should achieve as a entrepreneur to get there. तो वो चीजें एनालिसिस से आएगी. जैसा अभी being in connection with all my field members have given me a lot of edge
कि मुझे समझ में आता है। जैसे आज भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो नितेश बीइंग एन एडिशन टू दिस, तो ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलती है। ये स्किल सेट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जैक्टली आगे, जैसे इवन इफ नितेश इज इन बैंकिंग, अब कल उनको शायद एंटरटेनमेंट मीडिया का कोई एक बड़ा शायद मर्जर करना पड़े, तो यू हैव टू बी वेरी एनालिटिकल इन वॉट एवर यू आर डूइंग। आई थिंक दैट इज इन माई फील्ड, मेरा वो एक बड़ा स्किल सेट था जो मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा है, कि knowing what exactly you're dealing with, what kind of business you are dealing with, वो अगर आप उतना शार्प रहे, उतना एनालिसिस आप कर रहे, उतना स्टडी आप कर रहे, ये बिना स्टडी की फील्ड नहीं है। इवन इफ आई टॉक अबाउट विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन, यू हैव टू स्टडी द प्रोसेस। आपको सिर्फ ये नहीं पता कि वो बंदा बैठ के कंप्यूटर में क्या कर रहा है, कौन सा नोड लगा रहा है, बट नाउ यू कैन एग्जैक्टली टेल कि अगर उसके पास एक पर्टिकुलर शॉट गया है तो उसके स्किल सेट में कितना टाइम लगना चाहिए। जो हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं ना, मैन आवर्स का, मैंडेज का कॉस्टिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर इंडस्ट्री, बिकॉज हमारा प्रॉफिट्स उसी से कैलकुलेट होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग एंड उसको एक शार्पनेस देना है मुझे उस स्किल सेट को, कि मैं समझ पाऊँ मेरे बिजनेस में मुझे कोई बेवकूफ ना बनाए। Even though I don't understand ki how Photoshop works, if you tell me, I won't be able to do whatever you have done right now also. तो मेरा स्किल सेट उस मामले में बिल्कुल जीरो है, बट योर एनालिटिकल स्किल्स हेल्प यू टू डील विद पीपल, तो वो आपको बेवकूफ नहीं बना सकते। तो जो भी अभी ये देख रहे हैं, या जो भी सीएस हैं जो कंफ्यूज भी है, तो भी हैव पेशेंस, अपने आप की डिग्री पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने इंटेलिजेंस पे भरोसा रखिए कि आप का लाइफ आपको जिस भी तरह पे लेके जाए, वेदर इट इज प्लान्ड वेदर इट इज अनप्लान्ड, वो कहीं ना कहीं आपको फ्रूटफुल डेफिनेटली होगा। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। एंड जैसे नितेश ने प्रेजेंटेशन शेयर किया, आपको कोई क्लिप शेयर करने की इच्छा है? वो मैं आपको आखिरी में जो हम काम करते हैं वो मैं डेफिनेटली 5 मिनट का दिखाना चाहूंगी, विच इंक्लूड्स केजीएफ का वर्किंग वगैरह, तो वो एक ट्रीट हो जाएगा सबको इफ दे आर इंटरेस्टेड टू लुक इनटू इट। So yes, certainly we'll enjoy that. I just wish to ask both of you, and I think Sharvari first, like what opportunities are available in this field for young chartered accountants? Like chartered accountants कभी सोचेंगे भी नहीं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है, और अगर जाना है तो किस रूट से जाए, क्या चीज को एक्वायर करे। स्किल सेट्स की बात छोड़ दीजिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर नेटवर्क करना है, नेटवर्क करके भी आगे बढ़ना है, या फिर मुझे अगर कोई काम चाहिए, राइट फ्रॉम बेसिक मुझे काम चाहिए, तो अब मुझे काम कैसे मिलेगा और क्या काम मिलेगा, ये समझ। एक्चुअली जैसा काम का बात है, वो तो हर फील्ड में जैसा है कि आपका नेटवर्किंग अच्छा रहेगा तो ही आपको काम मिलेगा। तो मैं इस फील्ड में मैंने एक बहुत हॉलो स्टेज ये देखा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रैक्टिसिंग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो बहुत कम है। स्पेशली आपको मुंबई में वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारा बाकी एरिया है पैन इंडिया में, वहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो एज सच प्रैक्टिस करते हैं कोर एरिया एज एन एंटरटेनमेंट मीडियम, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। तो इसके लिए कुछ अलग नहीं करना है। अगर जैसे आपको अगर मुंबई में कुछ काम करना है, इफ यू नो सर्टन पीपल इन दैट इंडस्ट्री, जैसा आई हैड स्टार्टेड, जो मेरे एम्प्लॉयज हैं अभी, जो मेरे कलीग्स थे, आई हैड स्टार्टेड एजुकेटिंग देम द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलिंग इन ऑडिट, वो सारा एजुकेशन मैंने उनको दिया। वो ही काफी सारे मेरे क्लाइंट है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई फाइल देयर रिटर्न्स। तो वो नेटवर्किंग आपको, अगर आपने ठहराए कि ये चीज में करना, इवन इफ यू गो फॉर नेटफ्लिक्स, व्हेनेवर यू वी गो टू मीट पीपल, आई एम सरप्राइज्ड लॉट ऑफ देम आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। They are sitting on a creative post, but they are chartered accountants. Their CFOs, their CEOs, their COOs are chartered accountants. So they have understand the knack of it कि एंटरटेनमेंट फील्ड कैसा काम करता है, कंटेंट क्रिएशन कैसा काम करता है। तो इन 10 ऑर्गेनाइजेशंस अगर हम जाते हैं, तो कम से कम 3 ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स जो होते हैं, जो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो आई थिंक अगर आपको वो डिटरमाइंड है कि आपको यहाँ पे काम करना है, इस फील्ड में काम करना है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ ओपनिंग्स दे गिव इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वो एक होराइजन खुली सबसे पहले सोच में, जब वो सोच में वो होराइजन खुलेगा, तभी वो अपॉर्चुनिटीज सामने दिखेंगी कि क्या किया जा सकता है। जैसा इंटरनल ऑडिटिंग, जैसा मैंने आपको बोला, इट्स अ वेरी बिग प्रैक्टिसिंग एरिया। अगर कोई करना चाहता है इसमें, तो बहुत सारे ऐसे मीडियम साइज्ड फर्म्स है जहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दे पे यू लाइक एनीथिंग, यू विल नॉट इमेजिन उतना पेमेंट आपको मिलेगा जो आप स्किल सेट दे रहे हैं। आपके लिए वो बहुत छोटी सी बात है, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बट उनके लिए वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाता है।
तो इंटरनल ऑडिट ऑल्सो आप मतलब एक जिसको करना है इसमें ये एक बहुत अच्छा फील्ड है। तो नेटवर्किंग तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है सर हमारे यहाँ पे। अगर हम प्रैक्टिस में अगर जाना चाह रहे हैं या प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो जितना अपना नेटवर्किंग स्ट्रांग रहेगा, एनालिसिस पावर हमारी अच्छी रहेगी, वो कुछ करने का एक हिम्मत है। इट्स अ रिस्क फैक्टर। जब हमको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, इन माय केस इट वाज अ लीप ऑफ फेथ व्हिच आई वर्क फॉर मी। तो अगर वो आप चीजें करने का सोचेंगे तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आगे हैं। Just wish to ask Sharvari something more. Like मुझे अगर स्ट्रक्चर्ड वे में जाना है, स्ट्रक्चर्ड वे में मतलब कि अगर कोई ऐसा कोर्स है कि ये कोर्स मैं करूँ तो इस एरिया की सारी चीजें मुझे मालूम पड़ेगी। If that is something you can just pinpoint, that will add value, because क्या है कि जो आपने बताई वो चीजें बहुत सारी जेनरिक चीजें, जनरल चीजें, जनरिक है करेक्ट। हाँ, और उसमें क्या होता है कि मुझे तो शर्वरी मालूम, मैं तो शर्वरी से बात करूँ, अगर मैं 10 लोगों को जानता हूँ तो मैं 10 लोगों से बात करूँ। बट अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड तरीका है कि इसको मैं इस तरीके से अप्रोच करूं और फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, देन आई कैन कनेक्ट टू लॉट मेनी पीपल, इफ दैट इज पॉसिबल, वो अगर आप मुझे बता पाए और सब ऑडियंस को मालूम पड़ेगा, तो दैट विल डेफिनेटली ऐड वैल्यू। आई थिंक सबसे पहले तो जो स्पेसिफिक कोई कोर्स का जरूरत नहीं, बिकॉज अभी यूट्यूब पे इतने सारा मटेरियल अवेलेबल है कि हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स इन आर इंडस्ट्री। और सिर्फ एंटरटेनमेंट या कंटेंट क्रिएशन नहीं, एनी विच वेज, जैसे हम भी अभी यूज कर रहे हैं, इट्स अ टेक्नोलॉजी यूज। तो इसके लिए काफी सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जहाँ पे आप कुछ भी नहीं जानते फिर भी आप एजुकेट कर सकते हैं अपने आप को। तो आई थिंक दैट इज द best way to educate yourself on the technical part of it. Unless and until you know the technical terminologies थोड़ी बहुत, वो आपके लिए difficult हो जाएगा to present to someone if you want to go and work with them. तो आप पहले तो वो एजुकेशन थोड़ा सा कर लेते हैं, देन यू कैन जितने भी MNCs इसमें काम कर रही हैं, लाइक एंडमॉल है, रेड चिलीज है, काफी नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, दीज पीपल आर टेक्नोलॉजी प्लस फाइनेंस प्लस कंटेंट क्रिएशन का जोड़ है। तो यहाँ पे हमारे जैसे लोगों के लिए डेफिनेटली इतना रूम है, बट उनको वो चीजें मिल नहीं रही है बिकॉज वी डोंट एक्सप्लोर दैट थिंग ऑन अ वेरी प्रोफेशनल लेवल। तो आप थोड़ा सा अपने आप को इस बारे में एजुकेट करके अगर वहां पे प्रेजेंट करते हैं कि हम ऐसा काम, ऐसा स्ट्रक्चर लाना चाहते हैं, जैसा हम लोग अभी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में करते हैं कि हम अकाउंटिंग से लेके फाइनल ऑडिटिंग तक हमारा एक पैकेज होता है कि हम इतना काम ऐसा इस होराइजन में इतना काम करते हैं। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जैसा आप थोड़ा सा इसका नॉलेज ले ले कि हाउ OTT प्लेटफॉर्म वर्क, उनका कैसा मॉड्यूल होता है काम करने का, इवन ऑन अ टेक्निकल लेवल, पूरा समझना का भले जरूरत नहीं है, लेकिन वो किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है उतना आप थोड़ा एक एजुकेशन अगर विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, ऑफ कोर्स उसमें कुछ बाकी तामझाम का जरूरत नहीं है, उतना भी अगर आप करते हैं एंड वी प्रिपेयर अ स्ट्रक्चर्ड प्लान कि हाउ आवर ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क फॉर यू और आपके चीजों के लिए हम कहाँ का यूजफुल हो सकते हैं, आई थिंक दैट्स वेयर यू क्रैक इट। एंड दिस इज हाउ पीपल आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। आपको वो आपका एज थोड़ा सा प्रूफ करना है कि मैं ये जानता हूँ विथ फाइनेंस, तो उनको वो चीजें डेफिनेटली अट्रैक्ट करती हैं, विच हैज वर्क फॉर मी एज वेल कि अच्छा आपको टेक्निकल भी पता है प्लस यू आर अ फाइनेंस पर्सन, तो यू नो हाउ टू हैंडल मनी। तो वो चीजें आपके लिए बहुत फास्ट आपको कैटलिस्ट का काम करेगी। परफेक्ट। आई जस्ट विश टू ऐड, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो करिकुलम है दैट एक्चुअली गिव्स अस एन एज। लॉजिकल थिंकिंग जो हमारा है ना, वो इतना अच्छा हो जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इफ यू ट्राई टू ब्रेक दैट प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस एंड ट्राई टू से एड्रेस दैट स्मॉल पीस फर्स्ट, आई थिंक वी कैन गेट थ्रू द एंटायर प्रॉब्लम वेरी नाइसली। सो ये बहुत जरूरी है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मैसेज टू आवर ऑडियंस कि कितना भी बड़ा असाइनमेंट हो, कितना भी नया एरिया हो, उसको पहले ब्रेक करिए छोटे छोटे चीजों में, और वो छोटे चीज को पहले हैंडल करिए और उसको अचीव करिए, यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू द एंटायर प्रॉब्लम। नितेश, द सेम क्वेश्चन कम्स टू यू। अपॉर्चुनिटीज, मुझे तो पता है अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बट आई थिंक पीपल आउट हियर माइट नॉट बी नोइंग। आपने स्लाइड पे बताया भी था कुछ चीजें, सो यू जस्ट विश टू, आई जस्ट थिंक यू शुड हाईलाइट दोस एंड कैसे स्ट्रक्चर वे में इसको अप्रोच करें। जैसे आपने बताया कि एज अ CA यू ट्राइड कपल ऑफ थिंग्स बिफोर गेटिंग इनटू इट, तो क्या क्या चीजें अगर कोई यंगस्टर है या फिर कोई मेरे जैसा भी है उसको आज भी आना है, तो वेदर दैट इज ओपन फॉर से एज अ फील्ड टू अस, प्लीज एलाबोरेट।
For sure. So I'll just tell you an instance. And like many of my friends also have joined this webinar and they would have a smile on their face because I've cribbed a lot about this already. So since I'm in JP, I know people from lot of backgrounds that join and work with investment banking division. So JP ka jaise I told you ki they have fixed colleges and MBA colleges from there they hire. So they JP hire specifically from some engineering colleges as well. And kya categories wale? Mechanical engineers, computer science engineers, टेक्निकल इंजीनियर्स, वो लोग आके हमारे साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में फाइनेंस में काम कर रहे हैं. दे डू नॉट नो द एफ ऑफ द फाइनेंस. आई एम नॉट बिगिनिंग एनी प्रोफेशन, बट जस्ट टू टेल यू कि फाइनेंस में उनको कुछ भी नहीं पता है. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो. सो बेसिकली स्टार्टिंग में बहुत बेसिक ट्रेनिंग्स होती है जो हमको करनी पड़ती कंपलसरी, एंड आई नो द पूरा फाइनेंस का स्टफ. सो आई वाज लाइक स्लीपिंग पूरा फुल ट्रेनिंग में. एक टाइम पे मैं उठ गया बिकॉज दिस वाज फनी. सो कुछ तो वो बैलेंस शीट एंड पीएल का डिफरेंस बता रहे थे, एंड दे एक्सप्लेन्ड अस कि बैलेंस शीट में चेंज निकालना है to do current year minus previous year. So someone from the chemical engineering background asked them कि सर फिर अगर ऐसा बैलेंस शीट में करते हैं तो पीएनएल में भी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके डिफरेंस निकाल सकते हैं ना. तो आई वाज लाइक भाई साहब ही इज तो बेसिकली पीएनएल इज ड्यूरिंग फॉर द ईयर होता है एंड एट द बैलेंस शीट एट द पॉइंट होता है. तो इतना डिफरेंस भी उनको नहीं पता है, एंड दे आर गेटिंग हायर्ड इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन, getting much higher pay than the average pay that we get in the big fours as well. So basically that is the point that I'm highlighting कि CAs का scope बहुत ज़्यादा है इस industry में, and now the banks and the companies have like started recognizing these things. अभी JP Morgan में every 6 months regular recruitment drive होता है for the CAs specifically. Many of my friends, not only the IB sector, many of my friends are like specifically working in startup. जैसे एक मेरी friend है, she is working in a fintech startup. जैसे fintech का पहले भी discussion हुआ था, so she is working in a fintech startup and बहुत quality काम है. She is like evaluating the global opportunities for the fintech startup, funding रिक्वायरमेंट्स के लिए बात कर रही है. Since she's working on a lot of stuff. मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो जॉब्स छोड़ के अलग से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में काम कर रहे हैं. लाइक दे गॉट अ वेरी लुक्रेटिव रैंकर एंड अ लुक्रेटिव जॉब, बट दे हैव लेफ्ट दैट एंड डूइंग समथिंग ऑफ देयर ओन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वाइज. सो एंड एज आई टोल्ड कि अब बहुत जगह पे इजीली हर जगह पे प्राइवेट इक्विटी फंड्स है, वेंचर कैपिटल फंड्स है. कंपनीज आर डायरेक्टली टेकिंग आउट सीएस एंड टेकिंग देम एट पार एज द एमबीए ग्रेजुएट्स. सो बेसिकली बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, एंड नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि सीएस के पास जो नॉलेज है उनको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा. दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ जॉइनिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्म्स. सो बेसिकली दिस इज द आई वांटेड टू हाईलाइट दिस. उसके बाद द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एज आई टोल्ड यू, if you are interested into finance पहले से, so you have to like have some skills specifically. For example, networking, as Sharvari also said कि networking is crazy important. हर चीज में you do, आपको networking करना है, जितने लोगों से connect कर सकते हो करो. You never know कब क्या click हो जाए और कब कहाँ पहुंच जाओ. Finance wise, as I told, जैसे आपका एक subject होता है in final, उसके अलावा you can like specifically do courses for this stuff कि आप financial modeling पे कोई Udemy or Coursera से कुछ कोर्स कर लो, आप कहीं पे कुछ इंटर्नशिप कर लो, या अगर आपका ऐसा कुछ फाइनेंस का बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा है, सो यू क्रिएट अ वन पेजर फॉर अ कंपनी की कुछ एनालिसिस करके या डूइंग सम स्टफ लाइक दैट, सो दैट यू आर लाइक विजिबल टू देम कि या मेरे को फाइनेंस में इंटरेस्ट है. फॉर एग्जांपल इफ माय केस आल्सो इफ यू टेक, आई डिडंट हैव अ रैंक, बट जस्ट टू हाईलाइट देम दैट आई एम इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टमेंट एंड स्टफ, आई went to a stock pitch. Like basically मैंने 2 कंपनीज का पिचिंग किया, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस निकाला, एमएनए एमडीएनए रिपोर्ट्स में निकाला, एंड कुछ पॉइंट्स ऐसे बता दिए जो किसी को नहीं पता पब्लिक में. तो दे वर आल्सो लाइक वाओ दिस इज गुड, एनालाइजिंग स्किल्स इज गुड. सो बेसिकली थोड़ा सा फाइनेंस साइड में फोकस करके इफ यू डू दिस लाइक फॉर कोर्सेज कर लिया, सम इंटर्नशिप्स कर लिया. ऐसा भी होता है कि आफ्टर क्वालिफाइंग मेरे को सीधा जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, बट ऐसा नहीं है. रादर देन यू कैन गो फॉर अ इंटर्नशिप फॉर 6 months, have that background and then go for the companies. So basically do something so that you are visible to them, and then companies will surely pick you up. And as I said, बहुत ज्यादा opportunities बढ़ रही है और CAs के लिए इसमें बहुत ज्यादा opportunities आगे बढ़ने ही वाली है. Actually, I'm facing some network issues, so I have just switched off my video. I may not be visible to you directly, but I'll definitely stay connected. एक मुझे छोटा सा सवाल, एक फॉलोअप क्वेश्चन दोनों से पूछना है. नेटवर्किंग का आपने बात किया, राइट? अब नेटवर्किंग में क्या होता है कि वी ट्राई टू कनेक्ट पीपल थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स. ओके, सो इज देयर समथिंग व्हिच इज स्ट्रक्चर्ड इन दैट एज वेल कि कैसे नेटवर्क करें? आई थिंक सर जिस फील्ड में से मैं बिलोंग कर रही हूँ अभी, और रादर आई वुड टेक एन अपॉर्चुनिटी टू सेट, मतलब सारे यूनिवर्सली भी अभी प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लिंक्डइन इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपका ज्योग्राफिकली इफ यू आर कनेक्टेड समवेयर एल्स, बट आई थिंक पर्सनल मीट और
उसका जो एक इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है. मतलब whenever what has worked for me is I had always went to people. I go to people, I meet them personally in their offices or whenever they come to my office. अगर वो अपने किसी काम से आ रहे हैं, बिकॉज हमारा फील्ड में ऐसा है कि एक बार जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो हम सिर्फ पैसे के लिए बात करते हैं, बाकी तो जो बीच के हमारे टेक्निकल लोग हैं उतना ही काम करके उन्हीं से उनका कॉन्टैक्ट ज्यादा होता है. बट आई विदाउट फेल टेक अ चांस कि वो जब भी ऑफिस में अगर आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो या उनके असिस्टेंट्स हो, आई ऑलवेज गो एंड मीट देम व्हाटसोएवर. मतलब अगर उनका थर्ड असिस्टेंट भी आता है तो इफ आई एम इन ऑफिस आई मेक श्योर आई गो एंड मीट देम, आस्क देम व्हाट इज हैपनिंग. मुझे वहां से लीड जनरेशन बहुत अच्छे मिलते हैं, बिकॉज एट द एंड हम लोग किस तरह का रैपो शेयर करते हैं उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज क्लिक करती हैं. तो इवन इफ इट इज लिंक्डइन आल्सो, you make sure you wish everyone on their birthdays. If you are on Facebook is also a good medium to interact. आपको अपडेट रहता है सबका, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. तो आई थिंक यानी हर मीडियम इम्पोर्टेंट है, एंड उसमें भी आपका एक पर्सनल टच, अगर आप पर्सनली उनसे कनेक्टेड हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा दैट वो आपको एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी देता है कि समथिंग माइट स्ट्राइक इन फॉर यू. Perfect. Nitesh, your thoughts on that? Yeah, so basically, I also used to believe in this, keep meeting them personally gives you another kind of edge. And for example, maybe ऐसा हमेशा prefer करता हूँ to, like, I had to talk about my career and stuff to like some of the people, and I literally went 1 घंटे पहले मैंने कुछ train ticket book किया and I went to Bilaspur to meet one of my जीजूस there and talk about it personally. But the scene is, since last 2 years आप देख रहे हो कि scenarios have changed, all thanks to the pandemic and stuff. So obviously obviously personal meet is very important, but अगर वो नहीं हो रहा है तो you shouldn't stop yourself. अब आप जैसे देख रहे हो कि online हर चीज में there is online and facilities available है, तो why not reach out to people. जैसे मैंने बोला कि if you want to job and all, या कुछ भी interact करना है, किसी से कुछ बात भी करना है, just reach out to people. अगर आप 100 लोगों को reach out करोगे, at least 20 respond करेंगे. Have a word with them and trust me guys, people are so polite, so helpful. They are readily like available to share the number. कुछ भी discuss करना रहता है, कुछ भी help करना रहता है, people are there to discuss stuff. So basically I think कि मतलब obviously meeting personally is obviously a very good option, but even if you're not getting that, don't stop yourself. Try contacting. I think that also depends, Yash, ki what exactly Nitesh, is what exactly we are in. हमको हमारा वो जजमेंट लेना है कि कहाँ हमें पर्सनली कनेक्ट करना है, कहाँ हमें दोनों का जरूरत है, कहाँ हमें मतलब of course it's not definitely every time it's not easy to go and meet people, but ये मीडियम से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है. whenever you find the best possible opportunity, go and meet those people, have insightful sessions with them. और हर किसी के पास कुछ ना कुछ है शेयर करने के लिए. Exactly. So I think that kind of networking definitely helps you out. Exactly, and you never know कहाँ पे क्या क्लिक कर जाए. बिल्कुल. अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ये है कि what challenges did you face in this career of yours? Like any prerequisites कि आपको कैसे prepare होना है challenges के लिए. जैसे शर्वरी belongs to, as we all know, finance background. हम उसको CA को finance background बोलेंगे. And Nitesh also belongs to finance background, but he has landed up in finance. But you have landed up somewhere else. लेकिन नितेश को कुछ अलग चैलेंजेस होंगे उसके इंडस्ट्री में, उसके लिए कुछ अलग तरीके के मतलब आते ही होंगे प्रॉब्लम्स. सो उसके लिए आप खुद को कैसे गेयर अप करते हैं? हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्व्स? हाउ डू यू प्रिपेयर योर माइंडसेट? बिकॉज बहुत सारे मेंबर्स, इनफैक्ट सम स्टूडेंट्स आल्सो हियर, दे विश टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई फील, कि माइंडसेट को कैसे तैयार करना है. बिकॉज वी आर पैशनेट अबाउट लॉट मेनी थिंग्स, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर कंफ्यूज्ड. क्या होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. इतनी सारी चीजें कर सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि आपने बोला, लेकिन अब उसमें से चूज करना, और उसमें जब आप एंटर हो गए तो उसमें जो चैलेंजेस आते हैं, तो आपके चैलेंजेस और आपकी स्टोरीज थोड़ा ब्रीफ में आप अगर प्लीज बता पाए. Nitesh, you want to go first? Yeah, sure. So I'll go ahead. So as told कि हमारे पास as a CA हमारे पास बहुत सारी opportunities available है. We are very technically sound also, but things we lack in is presentation skills as compared to the MBA grads and other people as well. So in this profession also, I have realized one thing is presentation and marketing is like crazy important. Like all the MDs and VPs that are like important there, उनका पूरा marketing skills के कारण, the way they present, the way they talk to the people,
उसके कारण ही उन लोगों का पूरा वहाँ पे दे हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर. So I even me also for example जैसे like I moved to this industry, so rather I also faced a lot of problems in presentation skills. For example, I know how to make materials, मैं पूरा background बना दूंगा everything, but then how to present them to the clients. For example, जैसे मैं जिस भी deal पे काम कर रहा हूँ, and the best part about being in a global conglomerate is you get to work on very very good names. For example, 6 months down the job, I was on a call where there were some refinancing opportunities for Twitter. And in that, all the MDs and the CFOs of Twitter were there on one side, and all the MDs and the heads of the GP were there on the other side, pitching them about how you can reduce your costs and stuff. So basically, then like I listened to those calls, and then I realized the presentation skills, the way you market yourself, is very very important and can give you an edge in everywhere that you work on, be it any profession. So yeah, I faced and I'm still learning on these front, how to present, how to reach out to people, how to be very proactive, since because IB is a very like a demanding job. You have to be very proactive. Like we are pitching for a deal, 10 banks और खड़ी है वहाँ पे competition के लिए, sums में competition होता है. How you are pitching at the right time, working day and night, so that हमारा pitch सबसे पहले पहुंचना चाहिए, and that should be lucrative. How you present to the company. So yeah, presentation skills पे अभी भी I'm facing a challenging, but I'm learning on it, and I'll suggest people as well that please focus on presentation and marketing skills. That will help you a lot always. आई थिंक इससे मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे सबसे बड़ा चैलेंज यही गया. आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन बाय नेचर, और हमारा प्रोफेशन भी एक कुर्सी पे काम करने वाला ज्यादा है rather than बहुत ज्यादा बाहर जाना. एंड अभी जो मैं कर रही हूँ, इट्स कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ इट. You need to communicate with people day in day out, whether they are inside your organization or outside your organization. तो प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए मुझे भी बहुत चैलेंज गया वेरी इनिशियली. कम्युनिकेटिंग विद पीपल, हैंडलिंग स्टाफ ऑफ मोर देन 50 पीपल, उनके अपने चीजें, तो वो चीजें मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हुई. मार्केटिंग इसमें प्रेजेंटेशन करना, बिकॉज इफ आई एम गोइंग आई एम नाइव है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है. अदर जो रेड चिली से आ रहे हैं या जो अजय देवगन की फर्म से आ रहे हैं, दोस पीपल हैव 20 years of experience, and his marketing person is sitting, I am also sitting in a reputed organization, and I need to crack that deal, that give it to me being a chartered accountant. और वो हमारे शक्ल पे दिखता है कि हम फाइनेंस वाले लोग हैं. तो वो बहुत बड़ा एक चैलेंज मेरे लिए अभी भी है. ऑल्दो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. वो कोई चीज ऐसा बटन दबा के नहीं होता है. यू गो, यू फेल, यू कम बैक, यू लर्न फ्रॉम व्हाट यू, आपको क्या करना था, क्या नहीं करना था. स्पीच प्रिपेयर करके जाते हैं, ये बोलना है, ये बताना है, ये करना है. वहां पे आधी चीजें आप शायद भूल जाते हो, लुकिंग एट द स्टेचर ऑफ पीपल यू आर डीलिंग विद. ये बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का एक, और हर किसी का, मतलब आई एम जस्ट रिलेटिंग इट टू माय ओन वर्क फील्ड. वहां जैसा हम लोग जाते हैं, तो प्रेजेंटेशन व्हाट ही सेड इज डेफिनेटली समथिंग हमारे प्रोफेशन में बहुत जरूरी है, जो कि नहीं होती है. Although those people are joined in with WICASA, और जो हमारा कल्चरल एक्टिविटीज से जो रिलेटेड लोग हैं, वो फिर भी काफी कुछ कर सकते हैं. जो मेरे जैसे लोग हैं जो वो भी नहीं किए हैं, उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज हमारा प्रोफेशन हमें वो जॉनर नहीं देता है. तो आई थिंक दैट वी नीड टू डेफिनेटली वर्क ऑन, कि हम जो कैरी करते हैं, हमें वो जो कम्युनिकेशन, उसका प्रेजेंटेशन, ये दोनों चीजें बहुत बड़ा चैलेंज आ गया अगर हम अभी से उस पर काम ना करें. आई थिंक आप लोगों ने एकदम उसको बोलते हैं ना कि नेल्ड इट. द प्रॉब्लम इज नेल्ड इट. आई पर्सनली हैड बीन पर्सनली स्टिल टिल डेट आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, बट ये कैसा है ना कि अपने आप को एक्सप्लोर करने का जो बात है, हम लोग बोलते हैं ना कि मैं इसको समझता हूँ, उसको जानता हूँ, खुद को ही नहीं जानते हम लोग, और खुद की प्रॉब्लम्स को ही नहीं समझते. सो वी नीड टू बी इंट्रोस्पेक्टिव रादर देन इंट्रोवर्ट, एंड ट्राई टू कीप लर्निंग and keep growing. So ये प्रोफेशन हमारा जो है डेफिनेटली अभी वो मतलब चीजें आ रही है, but there needs to be lot much to be done in this area. Correct. So now one last question from my side, and then we'll keep this forum open for question and answers. My question to you is, what was the lowest point in your career as of date? Lowest point. I'll ask you the highest point after this, but lowest point सबसे पहले मुझे पूछना है कि कहाँ पे ऐसा लगा कि यार अब ये होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, अब मुझे इसमें आगे नहीं बढ़ना है. तो ऐसा कोई पॉइंट आया था कि इसको छोड़ देना है? बहुत पॉजिटिवली मैं आपको बताऊं मेरा एक्सपीरियंस, एंड आई वुड नॉट शाई अवे टू शेयर इट. मुझे रोज लगता है
मुझे रोज लगता है, क्योंकि और वो जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक एज देता है कुछ और करने के लिए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना आपको सेटलमेंट आ जाता है कि चलो इतना तो हो ही रहा है, तो व्हाट आफ्टर दिस। तो वो जो क्वेश्चन होता है वो मेरे लिए हमेशा एक लोएस्ट पॉइंट काम करता है। मतलब अगर कोई चीजें मेरे लिए वर्कआउट, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं फील्ड ना करूं। इवन दिस कोरोना पैंडेमिक्स हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए वी वेर द वन ऑफ द वर्स्ट हिट इंडस्ट्रीज ग्लोबली, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। लेकिन और बहुत सारे तब चैलेंजेस आए कि हाउ टू कीप अप, हाउ टू मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट वो चीज कभी नहीं आई कि ये नहीं करना है। एंड आई थिंक आई वुड सजेस्ट एवरीबडी ज्वाइनिंग हियर कि अगर आपका कोई पैशन है या आप कुछ करना चाहते हो ना, गिविंग अप इज नेवर नेवर अ सोल्यूशन फॉर दिस। आपको उसका सॉल्यूशंस निकालते रहना पड़ेगा। सम माइट वर्क, सम वोंट वर्क। और जो हम कंपैरिजन सिचुएशन में जाते हैं ना कि अरे यार क्या है, इतना मेरे उम्र में तो इतने लोगों ने इतना सब कुछ कर लिया, और वो आई थिंक हर कोई सोचता है इस बारे में। तो उस टॉर्चर से आप खुद को बचाइए। वो चीजों को पॉजिटिवली लीजिए कि ठीक है उन्होंने कर लिया, हम शायद और 2 साल में करेंगे, या ये मैं करना चाहती हूँ, आज नहीं हुआ शायद, मे बी आई एम कपल ऑफ इयर्स लेट, तो 2 साल बाद होगा, बट आई नीड टू बी वेरी परसिवरेंट ऑफ दैट। तो वो लो पॉइंट तो मुझे रोज आता है कि यार आज क्या नया, या आज क्या कर सकते हैं, आज कहाँ नया कुछ कर सकते हैं। लाइक आई एम वर्किंग ऑन एप्लीकेशन इन, जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, अंडर माई एनजीओ। इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क फॉर मी, और दैट इज अ रिजल्ट कि भाई अब तो कर लिया कमर्शियली। जो चैलेंजेस है वो तो रोज आने हैं, बिजनेस आना है नहीं आना है, काम होना है नहीं होना है, बट ग्लोबली उसका और क्या करना चाहिए। तो आई थिंक ये आना ही है। आई थिंक नितेश वुड ऑल्सो एग्री, सीए में फेल होते थे। आई एम नॉट अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो भी होप दे दिया था कि शायद होंगे नहीं होंगे पता नहीं, बट फिर भी हुआ। थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर बेटर। आई थिंक दैट people should definitely keep in mind that giving up is never an option for whatever you want to perceive in your life, personally also and professionally also. Right. Nitesh, please add your 2 cents. Exactly. And Sharvari very rightly said on this part that giving up is not an option, and discomfort wala that you should, matlab, I also try to follow this approach कि discomfort के साथ दोस्ती कर लो, so you'll never fall back. मतलब what next वाला feel basically. For example, अब मैं IB में आ गया हूँ, but I now still keep evaluating कि what next, अब आगे क्या करना है. Someday I'm talking with one of my friends and engineer friend, and we are talking about automating some GST का stuff. Then some other day I'm talking to my startup वाली friend की fintech में आगे क्या scene है, let's learn some languages like Python and stuff. So basically what next वाला approach हमेशा रखना, and don't settle down as she said rightly. मेरे भी ऐसे कोई बहुत experiences नहीं है, but one I would like to share that was a big one. So basically I didn't had faced any failure in my life every time, like all the exams and stuff, CA, VAP and everything. But so it happened कि articleship के साथ क्या, I thought कि at time so I'll pursue CS as well. I like why not, same course रहता है, leverage करके I'll give it my exams. मैंने December exams के लिए register किया था, and उस time पे मेरे सारे friends गोवा plan कर रहे हैं. मैंने सारे plans cancel किए. Like study, I'll go, नहीं मेरे को पढ़ना है, खत्म करना है. I अच्छे से पढ़ाई भी किया, but sometimes things just not click your way. And CS executive में I failed. तो लाइक मैं IPCC पास आउट हूँ, जो भी हो, थोड़ा सा एक सेल्फ एस्टीम आ जाता है, यू हैव दैट ओवर कॉन्फिडेंस आल्सो यू कैन से, एंड दैट हिट मी हार्ड. लाइक फर्स्ट टाइम फेल वर्ड देखा था एंड आई वाज शैटर्ड कि व्हाट इज दिस. सो दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट इन माय लाइफ. बट देन वही है कि पीपल अराउंड मी लाइक पुश्ड मी अप. आई वर्क फॉर इट अगेन, एंड दैट ईगो में आ जाता है ना कि हाउ मेरे को कैसे फील कैन स्टफ. Then next exam में I registered. उस टाइम भी मेरे पास इतना टाइम नहीं था because I had my classes. Then advanced ITT in 6 AM in the morning. तो then classes in the evening, office and stuff. जैसे तैसे रात भर जाके पढ़ रहा हूँ, फिर advanced ITT में सो के सर से डांट खा रहा हूँ. Whatever it is, I gave my exams again, and then I ended up getting all India rank 9 in that. So never giving up is a big thing that Sharvari also mentioned. So yeah. Perfect. That was Nitesh. You actually reminded me of my days when I flunked for the first time in CA Inter, and it was all because of certain major accident that I faced. And then too, I appeared for both the groups. People were telling me कि एक group दे दे भाई तो हो जाएगा clear, but I said नहीं मैं दोनों कर लेता हूँ. तो पहला group I flunked because of the aggregate, and second group was dismal. But then I think बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा कुछ हुआ है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ होगा, बट
ऐसे सब चीजों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और विनर इज अ विनर हु हैज ट्राइड जस्ट वन मोर टाइम, सो ही बिकम्स विनर बिकॉज ही हैज ट्राइड वन मोर टाइम, और वो शायद वन मोर टाइम इज दिस टाइम, तो वो हमेशा याद रखना चाहिए। एंड टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड, एक छोटा सा सवाल, जो हाईएस्ट पॉइंट वाला, कि अचीवमेंट क्या लगता है कि लाइफ में आपने इतना सब किया, सो शर्वरी और नितेश, बोथ ऑफ यू, ऐसा क्या लगता है कि हाँ ये अब अचीव हो गया, अच्छा लगता है सोच के। और वो सोच के इसलिए भी अच्छा लगता है बहुत बार कि हमारे पेरेंट्स, हमारे अगल बगल के लोग, हमारे साथ वाले लोग जो कभी ये सोचते नहीं थे कि ऐसा कुछ ये कर लेगा, वो अब देखते हैं कि नहीं इसने बहुत अच्छा किया। आई थिंक नितेश के फादर भी है यहाँ पे, हिज प्राउड पेरेंट हियर, एंड उनको भी ये लग रहा होगा कि नहीं बेटा अब यहाँ पे है, बैठा है। उन्होंने नहीं सोचा होगा शायद कभी ये, शर्वरी के पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा होगा कि शायद ये ऐसा कुछ करेगी, सीए तो बन गई, सीए बनने के बाद भी ऐसा कर रही है। पहले पहले तो बोला होगा कि क्यों जा रही है बेटा, वाई वाई। अभी नितेश भी को बोला सुनते होगा हैं छोड़ सर। देना बेटा, प्रैक्टिस है, अपनी घर की प्रैक्टिस है, क्यों जा रहा है, why is it required? So I think you both need to say put a very good statement of yours, because अब ये जो क्यों वाला जो सवाल है ना, उसके बाहर निकलना है। सो सबको मोटिवेट करना है, नॉट जस्ट द पेरेंट्स, द स्टूडेंट्स एज वेल। तो थोड़ा सा प्लीज इलाबोरेट करें इसके ऊपर। नीतीश Anyone? आप ही स्टार्ट करिए, बिल्कुल। इट्स नाइस uh, लिसनिंग टू यू। तो लाइक एज आई सेड, ऐसा मेरा कुछ बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, एंड आई ऑलवेज crib about, like I set very high goals for myself always. So कभी भी आप मुझसे पूछोगे तो आई ऑलवेज से कि यार अभी तक आई एम नॉट रीच टू दैट point of my satisfaction level. But a general statement on that point is, as Jiten sir also said, कि keep your horizons very open. Like obviously मेरा भी जैसे he said कि practice था, I could have like sat there और वहाँ पे काम करके chill करके रह सकता था. But you know that discomfort thing कि you know trying something new, going for something new. Just for example, जैसे ये finance वाला हैवी का जॉब था, I used to crib a lot about that to my father itself कि क्या ये इसमें कुछ opportunities नहीं मिल रही है, like what is and stuff. And then finally I reached out to a lot of people, slogged my ass for it, बहुत ज़्यादा try किया, and finally I got into it. So basically that is the point, that don't go with preconceived notions about this can't happen. For example, you also is a big inspiration. Like I never thought like कोई CSS में काम कर रहा होगा, VFX and all. So don't have that preconceived notion. If you want it, go get it. As simple as that. That's it. आई थिंक सर मेरे लिए तो खुद भी मैं बहुत बार कंटेम्पलेशन मूड में रहती हूँ कि आई एम एक्चुअली डूइंग दिस व्हाट आई एम डूइंग। लाइक आई मेंशन कि मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत है, अभी भी है, पहले तो और थे when I started off, and my career definitely demands communication, presentation, communication, marketing एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे करियर का। बट whatever challenges I faced, एंड चैलेंजेस पता है एक्सटर्नल तो होते ही, एंड आई थिंक आई एम श्योर एवरीबडी कैन रिलेट, सबसे बड़ा चैलेंज होता है खुद से लड़ना, हमारे प्री कंसेप्ट नोशन से लड़ना, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम वी ourselves don't know what we are capable of till the time we go set out and try it. तो हमको नहीं पता कि हम कितना अचीव कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो पहले तो वो रिस्क फैक्टर डेफिनेटली वो मैंने लिया है, लीप ऑफ फेथ लाइफ में। फ्रॉम स्टार्टिंग, from nobody, a single person knowing me in Bollywood or in South industry at all, to at least now if I go to any of the biggest or the smallest production house, may it be Dharma, may it be Netflix, may it be Endemol, or for that matter anybody, or may it be Yash Raj, they recognize me by my name, they know whom I am representing, what I am doing, what my company is flourishing, what exactly my horizon of work is, एंड दे आर प्रिटी मच हैप्पी टू वेलकम मी। मतलब मैं जाऊं, अगर मैं बोलूं मुझे आपसे मिलना है, तो दे आर ऑल वन कॉल अवे। तो फॉर पर्सन लाइक मी वो मेरे लिए एक बहुत हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इशू था, एंड आई एम वेरी शाय, आई कैन नॉट गो एंड जस्ट मिंगल विद पीपल। और मेरा जो फील्ड है उसमें वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टू सक्सीड, टू कनेक्ट टू पीपल। बट वो चैलेंज ओवरकम करके आज 5-6 साल में अगर मैं ये अचीव कर पाई हूँ, दैट पीपल नो मी फॉर द वर्क आई डू, डिस्पाइट दैट आई एम नॉट फ्रॉम देयर होराइजन्स, आई डोंट बिलोंग टू देयर टेक्निकल डोमेन, वो वेलकमिंग जो मुझे हुआ है, आई थिंक दैट इज व्हाट इज हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट आई सेलिब्रेट एज अ सक्सेस फॉर माई सेल्फ।
पैसा कमाना है नहीं कमाना है क्या करना है वो तो बहुत अलग बात है, वो पूरा अलग विषय हो जाता है. बट टेकिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड ऑन अ स्मॉलर लेवल पीपल एक्नॉलेजिंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग is I think is the highest point anybody could wish for in their life. Amazing. I actually like the clarity of thoughts both of you had, and the way you expressed it, it was really wonderful. Friends, it is rightly said that it is very difficult to break a prejudice, but it is at times very easy to break up atom. तो हम लोग एटम को तोड़ लेंगे जो इतना माइन्यूट होता है, बट हमारे खुद के बारे में जो हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस है उसको हम लोग तोड़ पाना, उसके बाहर निकल पाना बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव दैट हाईएस्ट पॉइंट कि भाई वहां से बाहर निकल के उससे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के अंदर वो जो लड़ाई चल रही है उसमें जीतते जा रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइस, आई थिंक फ्रेंड्स, I keep this platform now open for question and answers. And उसके पहले I think अगर कोई videos हैं आपके पास में, दोनों के पास में, to share something, because Q&A में और मजा आएगा जब आपके वीडियोस लोग देखेंगे, उसके बाद में सवाल जो आएंगे ना, आई थिंक वो सवाल और अच्छे होंगे, ऐसा मुझे लगता है. So let's have something. मैं छोटा सा एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी which is making, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा CS से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है शेयर करने के लिए. No worries, no but worries. how we have worked for say बाहुबली, how we have worked for KGF, तो वो समेशन एक मैंने वीडियो में बनाए हैं, तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा वो देख के. Can you start sharing the screen? Yeah. Let's just start sharing the screen. Yeah. देख पा रहे हैं ना? Yeah. Sharvari, you just pause it once and आपके Zoom में आपके पास में नीचे में दो ऑप्शंस आए होंगे शुरुआत में, ऑडियो एंड वीडियो जो है उसके लिए, कि उसका एनहांसमेंट के लिए आपने उसको क्लिक किया था. I think this has started directly. हाँ, उसको आप वापस रिप्ले कर दीजिए, वापस स्टार्ट से प्ले कर दीजिए. ठीक है. शर्वरी, इसमें ना ऑडियो नहीं आ रहा है. Is there any audio in this? Sharvari ma'am, you may have to stop the sharing once and just click on the share audio button while screen sharing. क्योंकि वीडियो का ऑडियो नहीं आ रहा है इसमें. Sorry, you were saying something? Yeah. The audio of the video is not audible, so you may have to stop the sharing once and replay the video from the beginning actually. Oh, is it? Yeah. Okay, just a minute. जब आप शेयर करते हो ना स्क्रीन को, तो नीचे में आपको दो बटन्स आते हैं लेफ्ट साइड में, उन दोनों को टिक करके आप तब शेयर करिए, सो दैट ऑडियो जो आपकी तरफ चल रहा है हमको भी सुनाई दे. Okay, just a minute. There is an option for sound optimization. Yeah. Okay, optimize for video clip and share sound, right? Optimize, उस पे क्लिक करके आप उसको शुरू करिए, वो आ जाएगा. Okay. Just a minute, I'll just start from the beginning. और हाँ, ठीक है. यहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से देखे हो आपने. नहीं, आप पूरा शुरू करिए ना, हमको देखने का मजा आएगा. Is it now audible? Yeah, perfect. Yeah.
रोज 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 देखते जाओ बस खाली मेरा गंदी गई पूरी Hello. Yeah. I just
नाउ रिक्वेस्ट यू हाँ कि अभी आपने जो शेयर किया उसको थोड़ा सा आप समझाए भी उसमें क्या चल रहा था, बिकॉज देयर वर सर्टेन सीन्स जहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ नहीं था, बाद में बैकग्राउंड में आपने कुछ क्रिएट किया, जैसे कोई पीछे आग लगी है तो वो आग एक्चुअली थी नहीं, वो विजुअली लाई गई, राइट, क्रिएट की गई है। हाँ, तो ये सब चीजें आप करते हो, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थोड़ा सा जैसा इसको वो elaborate- जैसा आपने बाहुबली का वो सीन देखा जहाँ पे वो जो पिग को वो मारती है, तो दैट वी हैव शोन हाउ एक्चुअली वी हैव शॉट। इट वाज अ ब्लू कलर का कंटेनर, फिर वो वहां पे स्ट्राइक होता है, फिर वो हम रोटो से उसको निकाल के वी टेक द 3D एनिमल, क्रिएट डस्ट, द 3D का एरो क्रिएट होता है, उसके बाद फिर वो उस तरह से एग्जीक्यूट होता है उस चीज में। तो वो लेयर्स उसमें दिखाई जाती है कि एक्चुअली क्या होता है। जैसे आपने वो बच्चे को ही वाज हैंग्ड अपसाइड डाउन, तो शूट करते टाइम उसको एक जेसीबी वाले उससे उसको रोप से लटकाया गया है। देन वी वर्क ऑन द बैकग्राउंड टू क्रिएट द डेप्थ ऑफ इट, फिर वो पूरा रोप कटिंग होता है तो उसका वो दिखे नहीं जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स है। तो इस तरह से मैंने जो आप देखते हैं वो मिनिमल रहता है शूटिंग में। इवन इन केजीएफ आल्सो राइट नाउ आल्सो व्हाट वी आर वर्किंग फॉर, और जो लास्ट में भी हमने काम किया वो केजीएफ में भी डेप्थ ऐड करना, जो आपकी क्राउड मल्टीप्लिकेशन है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं इसमें। Wonderful, wonderful, amazing. Thank you so much. और Nitesh, now I request you to share your part as well. Yeah, so basically it's just a video of a clarification because I am expecting जैसे ही Q&A open होगा उस पे for sure question आएगा, तो just a small 30 seconds video to refresh your memory of a 10-year-old ad. Just a second, I'll share my screen. Let me know when it's visible to you. Is it? Yeah. Sir, may I present? And is it audible as well? Yes. Okay. Yeah. Present to you the super luxury yacht, the Nefertiti. Apart from all the luxuries, it has 6 luxury suites, 3 kitchens, a mini golf course, a 3D theater, 2 ballrooms, and to top it all, it has a top speed of 25 knots. कितना देती है? For a country obsessed with mileage, Maruti Suzuki makes India's most fuel-efficient cars. So guys, just advertisement to refresh your memory. ये क्वेश्चन हमेशा हर जगह पूछा ही जाता है कि सब ठीक है, काम वाम करते हो, पैसा कितना मिलता है, कितना देती है? So basically, just to clarify, I'm not allowed to share my exact details, but just to give you a brief, it's a good amount of decent pay with good bonus and much more than the industry standards elsewhere. In addition to it, I have a salary report from a reputed organization. I'll share you guys a link of it in the comment section. You can check it out if you want about the compensation details. That's it. I'll share the link soon. ये मुद्दे की बात है. Perfect. एकदम point पे आ गए नितेश. And I think now we can keep the forum open for question and answers. Yeah. May I present to you? Sorry. Is it something that you're playing now, Nitesh? No. It was by mistake. Okay. So where is the Fireside now? I think we are on to our screens. Is it? Yeah. I think Ame, if he's there, he can put all us on the same platform so that all 3 are visible. Abe, you can please do that. And while he does that, in case there are any questions, there was one question here in the chat box, which was like, okay, are there any specific tax exemption for entertainment industry? Any subsidy available? So Sharvari, this is for you. I think for production there are many subsidies available. जब आप प्रोड्यूस करते हैं किसी फिल्म को, तो जहाँ जहाँ आप शूट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट, दैट इज कम्प्लीटली स्टेट गवर्नमेंट बेसिस. आई डोंट थिंक सेंटर में इतना रिकॉग्निशन अभी एंटरटेनमेंट, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. यहाँ पे भी हमारे मतलब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारा एक बहुत बड़ा रोल कॉल आगे आता है. दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वी
अडेप्ट टू दिस एंड कितना हम सीरियसली लेते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोला जाता है बट देयर इज नो रिकॉग्निशन ऑफ इंडस्ट्री एज सच टू दिस एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल. तो सिर्फ ये यूनियंस के भरोसे पे चलता है. स्टेट गवर्नमेंट में अगर कुछ सब्सिडी प्रोडक्शन में मिलनी होगी तो मिलेगी, अदरवाइज तो देयर इज नो प्रॉपर रिकॉग्निशन एज सच. जब कोई जैसा वीएफएक्स स्टैंडर्ड में दैट कंप्लीटली कम्स अंडर आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री ब्रैकेट्स. तो आईटी से रिलेटेड जितने एग्जाम्पशंस हम लोग अगर एससीजेड में काम कर रहे हैं तो उसमें जो एग्जाम्पशंस मिल रहे हैं तो दैट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू इट इज आईटी इंडस्ट्री काइंड ऑफ अ थिंग. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को स्पेशली जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई बैंक हमको प्रॉपर फंडिंग नहीं करता है. तो वो एक बहुत चैलेंजिंग इंडस्ट्री है. लेकिन इन टाइम टू कम वी आर द पीपल हु कैन चेंज द फेस ऑफ इट. एंड माय अर्नेस्ट अटेम्प्ट इज मतलब स्टिकिंग टू दिस लाइन इज कि यहाँ पे बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है फॉर दोज हु आर स्किल्ड, फॉर दोज हु आर नॉट स्किल्ड. इट कम्स अंडर अ नॉन वोकेशनल काइंड ऑफ अ थिंग. तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. तो माय प्राइमरी एजेंडा टू कीप अप विद दिस लाइन इज टू गिव सम रिकॉग्निशन इन माय ओन सर्टेन स्मॉल वे. तो एज सच कोई डायरेक्ट टैक्स एग्जम्पशंस नहीं है इसमें. You need to find a way where CA का दिमाग कि what exemptions you can claim. Right. Now we have people who have raised their hands and they want to ask questions, and I think we can unmute them to ask questions. Avni is there. I know Avni well. So Amay, you can just put on Avni's audio, and Avni, you can just switch on your camera as well so that you'll be on the screen while talking. Good afternoon, sir. Actually, I'm not in a very good network zone to put on my camera. I'm not at my home right now. So I would just throw my question. I'm sorry I couldn't put on my camera. So it's a very generic question, not specific to Nitesh or Sharvari. I would like inputs from both of them. Actually, I qualified my charter accountancy with Nitesh. I mean, in his attempt, like when he qualified, I qualified. After that, in June 2021, I joined KPMG for statutory audit profile. So before joining, everybody told me that, before joining, you should have clarity what domain you want to get into, what are your interests, what are not your interests. So I did my articleship from Nagpur itself. It was a regular work, regular auditing, taxation, indirect taxes, direct taxes work. So, but after joining statutory audit, what I've realized is ki, yeah, it's fine for a point of time to get a global exposure and big four exposure. It is fine, but this is not something I feel that I would pursue in the long run. Okay, but having said that, I don't even know that what is the next thing that I should switch on to, and what is the, like, and again, I'm not someone who has qualified in first attempt, so that mental dogma of, like, oh, I have a lot of attempts, I don't have a very outstanding profile, I am doing just average work what charter accountants does, and yet I have the ambition of doing something different or going for some exclusive things like this, or, like, standing out from the crowd. I also have the desire for it. So having so many horses running in different direction, how do I put, like, everything into one direction? And, like, if I want to achieve something like what Nitesh is doing, like, if that is something that attracts me but I don't have the knowledge for it, so with my current job, how can I achieve that so that my next step could be in the direction that I want? Very practical question for both of you. I would love to take this one. Just to start with, Avni, same scenario, trust me on this. When I qualified as a chartered accountant, almost similar situation I was into. Like, ठीक है, CA कर लिया, I tried a lot of stuff. Now what next? I don't have a clarity of what to do, but I want to do something different from the crowd and stand out. So basically, मुझे भी लोगों ने यही suggest किया था with the people I had a word with. Talk out to as many people as you can. Like, for example, आप evaluate कर रहे हो and you are not clear. Even I am not clear about कि क्या करना है. हो सकता है after 5 years I start something of my venture capital fund or something, or I do something of my something like that. So basically, first step that you can think of going forward is
talk to as many as people as possible belonging to different fields. For example, अभी आपने यहाँ पे 2 लोगों का experience सुना. If you want, we can connect later also, and I can tell you more about the IB thing in details about what exactly we do work in deals. For example, अगर आपको लग रहा है कि मुझे stock market side interest है, so you have a word with someone working in a reputed stock like equity research profile. Then you can have a word with people working in the consulting. That's also a very cool profession to go in, considering your problem solving skills and stuff. So I had a word with them. What do you do? How do you approach like working there? What is your work experience? Are you liking it or not? बहुत सारे startups में opportunities open हो गई है, तो you can have a word. People are working in startups as well, and ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता contact. For example, I also reached out to one person. She gave me a contacts of 9 other persons, and then when I reached out to the 9 other person, they gave me contacts of other people as well. So basically, if you're not clear, first have a word with people of different professions, what they are doing, and then sit and introspect what is the thing that is clicking for you, and like what is giving that charm. यार ऐसा शायद मुझे कुछ करना है. Once you decide that, उसके बाद you can go to the structured approach on how to like go for it. And as I told like throughout the seminar, don't consider that कि CA है या second attempt है या नहीं हो रहा है. In JP also, in investment banking also, there are people from the second, third attempt as well who are working as ICAI. So I want to break that like this thing कि यार एक बार अगर आप first attempt नहीं हो तो you won't get chances. बहुत ज़्यादा opportunities है. Now the firms and the big companies have started realizing also the importance of CAs. So trust me, there are a lot many opportunities, but the first step I would suggest is talk it out to as many people as you can, and then go for the structured approach. And one more thing that I've heard, like generally, I know a lot of people who have been into statutory audits of Big Fours. So, there is this thing that I have been always told that if you get stuck in here for more than one and a half year, there is no way out of this. But before, like right now also, when I see that there are certain calls coming in from industry for certain profiles, before taking it further, there's always one thing in my head that I don't know all the things in my organization right now. Then why should I switch on to other things? I might as well do what is in my hands first. So that is something that goes in my head. So that switch is also like, I want the switch also, but exactly. Yeah. So I got your point. So first of all, that's a very big misconception that if you are in a start audit department for 1 year or so, there won't be any opportunity open for you. In fact, working in a Big Four gives you that exposure of working extensively in specific industries and stuff. So for example, if you are have worked in a specific industry throughout the year or a listed company, आपको उसका बहुत in-depth knowledge हो जाएगा, and later on you can move to that industry or even to a consulting firms where people do the restructuring of such kind of companies. For example, आप health company के audits में थे या आप tech companies के audit में थे, तो IB firms would love to have you as a team member because you know in and out of the industry overall. So ऐसा बिल्कुल भी नहीं है that आप start में हो तो you'll get stuck there. It's just the approach that you have to change, the way you have to present them, the way you have to show that I'm interested in this kind of fields, do some right courses at the right time and show them, and then you'll get in, I feel. Thank you so much, Nitesh. No worries. Thank you, Sharvari. I just wish to add something here. एक मैं quote जो है ना वो chat में डाल रहा हूँ. This is something you can actually do. Keep reading good books, good autobiographies, and बहुत सारा जो inspiration है ना वहाँ से मिलता है. अवनी, for you. So अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते रहोगे ना तो ये जो networking है वो तो definitely required है. But जो हमको समझना है हमारे बारे में, बहुत बार ना अंदर में बहुत सारी चीजें होती है वो क्लिक ही नहीं होती हमको कि हमारे अंदर ये है वो है. वो हमको अच्छी चीजें पढ़ने से समझ में आता है, फिर ध्यान में आता है कि अरे हाँ ये है, ये मैं रिलेट करती हूँ, मेरी लाइफ में भी ये सब चीजें हैं और मैं इस तरह से आगे बढ़ सकती हूँ. So no books, no life. No books, no life. Right? Thank you. That was quite insightful. So thank you so much. You have always been quite a help. Thank you, Avni. We have other question coming from Ashish. Ashish, you can also put on your mic and put on your camera and ask the question to the distinguished speakers. Thank you, Jitendra sir. First of all, I'd like to thank you both for this lovely session, and it was really insightful. My question is to Nitesh sir. Sir, actually, I loved your session and all the information. But one thing I was always curious about is you told us how we get into investment banking.
Like I want to know what are the growth opportunities, and like you told that you were planning, like you were just like telling us that you might open a venture capital firm and things like that. So I was always curious, how are the exit opportunities in investment banking? Really And good. especially your field where you told us that you're working in DCM, that's the debt capital. Exactly. Yeah, a very good question. Thanks for asking this. So yeah, as told, investment banking may when you are working in investment banking team specifically, and if I tell you about my team, I work in the companies that doesn't have that good ratings. Like they're like the leverage finance companies that don't have that good ratings and stuff. For example, Netflix and Apple ka ratings itna acha hai, they'll go to the market and people are dying to buy their stuff, invest in them. But I generally do work in this industry jahan pe the companies doesn't have a very good credit picture also, and we help them raise funds and funds in terms of loans and bonds. So one of the opportunities that is open specifically for the debt team, if you ask us, is getting into private equity and private equity firms. So because we have this experience of showcasing the companies in a very very good manner, we also know how to analyze stuff, how to like think about the companies in a way that we can present it to the best possible manner. So I know people from our debt team as well who have moved to private equity front end office roles as well. Then there are opportunities to obviously move to the front end investment banking firms. When you have such a tag, you can use that as well. And also many middle level and the boutique investment banking firms in the front end office as well. For example, one of my friends is now working in EY investment banking, and he was involved in this Akash Byju's deal as well. So obviously, when you are in this domain, a lot of opportunity gets open up to you in finance as well as consulting also. Like I have heard people, since they had analyzed since they're working on underwrite, so whenever a bank is working on underwrite, they do a detailed analysis because they are putting their money as well on that. So they do a very detailed analysis on what are the company future prospects, growth kya hai, everything. So you know the industry in and out. So many a times the big consultancy firms also pick you up because you have knowledge of that specific industry. And obviously you can have that leverage of starting something of your own, because debt is a very niche field. Obviously India में importance अभी धीरे-धीरे बढ़ रहा है as compared to other countries, but definitely a very growing field going forward ahead. So yeah. I agree with Nitesh completely. Debt में तो बहुत opportunities है. People find opportunities in equities, but I feel debt में जितना opportunity है वो equity में मतलब अभी debt तो I think if I'm not wrong, Nitesh, you can just correct me. Indian equity market is say 100 and debt market of India is say 60. Is it the right statistics as of now? I'm not sure about exactly the right statistics of India market because Because I heard that US debt market is 160. If the equity market is 100 there, the debt market in US is 160. In Australia, it's 100 both. So we have say big gap there, and even China, I think they are say sub 100, somewhere close to 100. So yeah, friends, any further questions? Questions and queries? Yeah, I had a follow-up question actually. So, Nitesh sir, I just wanted to know, like you told that there are opportunities in front end also. So, I was curious that do CAs also have opportunities in investment banking and outside the country and outside countries like US and all? And can we expect you to go to some foreign country very soon? A good question again. So basically, as told, directly as a CA fresher, I don't think you will get into a front-end job in a big bulge bank unless and until you are having a very good profile and very good stuff. That is rare. Although I know some people who have like qualified CA and then went to a big Bank of America internship and now they're working in the front-end office as well. But after working in the big conglomerates with the big tag, we also have opportunities to go into front-end directly from here. For example, if I'm working from the NA region, if I work well and they like my work, and after some years, if there's a opportunity there, they can like directly take me in the front end office there. Or other route is obviously you can like work there for 4-5 years and then try for something directly outside the country, I feel. But I'm also not sure about what takes me ahead, because even I'm not sure what I'll be doing 2 years or 3 years down the line. I think वो uncertainty है और वो picture clear नहीं उतना ही मजा ज़्यादा आता है. Exactly. That is the discomfort, but that discomfort grows you as a person overall. Yes, certainly.
So I think we have overshooted the time, but if there are say one or two questions more, we can take it as it comes, or else we can wrap up. I have a question for Sharvari actually. Yeah. In the initial days, like when you were doing articleship and like you were working in pretty traditional areas like internal audits and then compliances or taxes and GST, etc., etc. Uh, since your field is very fascinating and it was very amazing to watch that video, what kind of vision or fascination you had? Like, had you ever imagined कि आप इस फील्ड में एंटर करेंगे या फिर you would work in this area? No, never imagined actually. And full-fledged, so I don't think मैंने कभी in the wildest of dreams I would have thought of this whole thing. क्योंकि जब हम आर्टिकलशिप करते हैं तो हमें टैली का अकाउंटिंग से स्टार्ट होना पड़ता है. मतलब the kind of articleship I did was entering clients' data into tally to signing off the balance sheet. For a couple of years I was into that. I never liked audit as such, as a subject also and as a work also. पर्सनली तो मेरा हमेशा बहुत ट्रेडिशनल टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, आई वाज मोर इनटू इनडायरेक्ट टैक्सेस, असेसमेंट्स एंड अपील्स, वो मुझे ज्यादा फैसिनेट किया था. तो वो जो काम कर रही थी मैं उसमें, तो कभी मतलब कोई भी नहीं सोच सकता था. आज तक मेरे पेरेंट्स भी वो कंटेम्पलेट कर ही रहे हैं कि ये कुछ ऐसा कर रही है शायद. तो वो कभी उन्हें लगता है भूला भटका ये शायद वापस सीए में आ जाएगी काम करने के लिए. तो दे हैव दैट होप्स नाउ आल्सो. लेकिन हैविंग सेड दैट, उसका जो एक्सपीरियंस लेकिन मुझे हुआ, जो भी हमारा आर्टिकलशिप है, जो मैंने जॉब किया सखदेव सर के यहाँ पे, जो भी मेरा एक वर्क एक्सपीरियंस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा है, दैट हैज हेल्प्ड मी इमेंसली फॉर गेटिंग इनटू दिस लाइन एंड बीइंग कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. व्हाट इज प्रीरिक्विजिट ऑफ डूइंग एनीथिंग इज यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ ऑफ योर ओन वर्क. वो एक्नॉलेज होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें हम खुद तो कंफर्ट जोन में आए. तो जो आर्टिकलशिप का पीरियड है ना, ये मैं सबके लिए आर्टिकलशिप एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है. मेरे लिए तो स्पेसिफिकली था क्योंकि लाइफ खत्म हो जाती है हमारी. बट उसको बहुत पॉजिटिवली लीजिए. जो हम 2-3 साल 4 साल का हमारा जो मेहनत है, जहां हमारा लाइफ खत्म हो जाता है ऐसा हमें लगता है, बट दैट इज अ रीबर्थ व्हाट वी टेक. हम कहाँ से कहीं भी जाए यहाँ से, चाहे हम सीए में प्रैक्टिस करें, चाहे हम एकदम टॉप एज कंपनीज में जाए, जैसा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसा फोरम ओपन करे अपने आप के लिए, वो फील्ड में जाए, ओवरसीज में जाए, कहाँ पे भी जाए, लेकिन आपका डिग्री जो आपको जो परसिवरेंस सिखा चुका है, जो पेशेंस आपको दे चुका है, जो विजन आपका एस्टेब्लिश कर चुका है, दैट इज रिमार्केबल. वो आपको आई डोंट थिंक कोई और प्रोफेशन देगा. तो जो भी इस प्रोसेस में है, सिर्फ आपका थोड़ा मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे साइड बाय साइड काम करिए. आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर प्रोफेशन एज रिवॉर्डिंग एज चार्टर्ड अकाउंटेंसी. You go for a job, you go for practice, or you wish to quit everything and do something else, but whatever you have learned in this process is going to stay with you for long, for sure. तो आप जो कर रहे हैं उसका मजा लीजिए बस. जो आप सीए में कर रहे हैं, जितना आप उसको में फन लेंगे उतना आपको उसका आगे फ्रूट्स आने वाले हैं डेफिनेटली. जितेन सर आप Yeah, it was really amazing to hear that, because हम लोग बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं इस बारे में कि सीए को परस्यू करना चाहिए. लोग बोलते हैं क्यों कंपटीशन बढ़ा रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ कंपटीशन नहीं बढ़ा रहे. आप बिलीव नहीं करेंगे सर, हमारे यहाँ पे 3-4 साल पहले एक बंदा था, he was just 12th pass and he was very fascinated that यार you are doing something in this field. तो he had taken up a chartered accountancy looking at my work profile and now he is intermediate clear. So he had no goals of being a chartered accountant. He was a technical person, but वो उससे fascination हुआ and that has really helped in his work also. So actually, you definitely should go for this course for sure. और मुझे ऐसा लगता है, हम लोग हमारे जब आर्टिकलशिप करते थे ना, तब एक जोक चलता था. वो जोक मैं आज शेयर करता हूँ. दिस इज अ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बट स्टिल आई जस्ट पुट इट अक्रॉस. बात ऐसी होती थी कि अगर हम लोग नहीं रहे और यमराज लेने आया, तो यमराज बोलेगा कि आपको नर्क में डालना है, लेकिन मैं बाकी लोगों को 100 साल के लिए डालूंगा, आपको 97 के लिए डालूंगा, क्योंकि 3 साल आपने ऑलरेडी आर्टिकलशिप कर. So just on a lighter note, but ये process सब लोग गुजरते हैं, and that is what makes us so strong and so perseverant.
in lives. So it was amazing answer. Any further questions? We can take at least one more. None. Yeah. So बहुत बहुत मजा आया सबको. I hope. एक सेकंड. Yeah. मैम आपको थोड़ा सा कुछ डर लगा था कि जब आपने ये डिफरेंट सेक्टर ज्वाइन किया एज अ प्रोफेशन? बिल्कुल सर 2-3 चीजें इसमें बहुत प्रोमिनेंट है. एक तो आपके फैमिली का, आपके नियर वंस का उसमें सपोर्ट, जो कि मैं प्रिविलेज थी कि मुझे वो डेफिनेटली मिला है विदाउट डाउट. दूसरा है जेंडर. हालांकि बहुत ज्यादा उसमें मुझे दिक्कत नहीं गई है, लेकिन डेफिनेटली जेंडर बायसनेस एक जो होता है कि लड़की हो, फिर वो एज फैक्टर, फिर अच्छा आप ये करेंगे तो आगे ये कैसा होगा, तो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आप पे शूट होते हैं. बट आई थिंक इट्स अ प्रोसेस. लीप ऑफ फेथ आप लीजिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो ये होता है फॉर श्योर. डर तो बहुत लगता है, अभी भी लगता है. फेलियर का डर तो सबको होता है, लेकिन आई थिंक सीए में वो भी सीख जाते हैं हम लोग कि चलो फेल होना कैसा होता है लाइफ में. तो इट्स एन ओवरऑल एक्सपीरियंस. लेकिन आई थिंक लीप ऑफ फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पैशनेट है तो वो डर से डर के फायदा नहीं है. यू हैव टू गो पास्ट दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ. ऋषिकेश, आई थिंक शादी करते भी डर लगता है, बट करते हैं हम लोग. सो डर हर चीज में लगता है. बाप रे. Don't worry. बाप रे. Actually बाप रे, because ऋषिकेश is about to get married. So उसको ये है कि भाई अच्छा पार्टनर मिलेगा, बट you never know क्या होता है. But I'm actually say praying for you. Don't worry ऋषिकेश. बट सब चीज में डर लगता है. So डर तो है, बट डर के आगे ही जीत है. And getting beyond that is very important. So I think we can conclude the session, and I hand it over to Amey now to do the further proceedings. Over to you. Thank you so much, sir. It was really nice to listen to this chat session with our dynamic speakers, and really enjoyed this session and loved it a lot, because there was so much to learn from that. The way both the speakers interacted and uh, spread the knowledge about whatever they are doing or whatever new venture they are entering into. That was just amazing. On behalf of Nagpur branch of ICAI, I would now like to propose a formal vote of thanks for this session. First and foremost, I would like to thank our keynote speaker, C. Anil Bhandari sir, for joining this session and guiding all the way in the session, and motivating us to keep on thinking about the solutions which we can provide to the industry. I also thank the young and dynamic speakers, CA Sharvari, Watak ma'am, and CA Nitesh Jagwani sir, for all the time and efforts they have taken to enlighten us in this session. And also thank in his absentia, Chairman Satara, branch of ICI, CA Jivan Jagtap sir, and Chairman of Satara WICASA, CA Hrusikesh Mangade sir, for supporting Nagpur branch in this program. Last but not the least, the audience which we have joined this session in numbers and made it interactive and put up many questions, and thanks for joining as well. Uh, uh, I now request everyone to put on their video so that we can have a screenshot of the entire forum. Friends, if you can just put on your videos for a couple of minutes, not more, so that we can have a small screenshot for our memories. Nitesh as well as Sharvari will love to have this snap with them, and we all will actually have the memory of having this interactive session with them. So, friends, if you can just put on the cameras. Yeah, and in case anyone has missed out something in this program and like to watch this program again, we are streaming this program on YouTube as well, and the link was shared earlier as well on the email. I'm also just putting up the link on the chat box as well. नितेश एंड शर्वरी, आप आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स अगर चैट बॉक्स में शेयर कर देते तो बहुत अच्छा हो जाएगा, so that people will connect with you in case they want to after this session as well. Surely.
And Sharvari, we look forward for some opportunity to Nagpur branch members. हमारे स्टूडेंट्स भी है, सब बहुत अच्छे दिखते भी हैं. आप ऐसे आप उसमें सब एडजस्टमेंट कर दोगे, मुझे मालूम. अभी तो सर काफी चीजें हैं, हम लोग बहुत सबको चांस दे सकते हैं, ऐसा सीन बनेगा पक्के से. ऐसा कुछ करना चाहिए आपने. You know what? Whenever we shoot anything, we definitely for 99% of cases we prefer Nagpur. We shoot here only. So perfect. There are a lot of things coming up. आप देखने के लिए इनवाइट करिए, पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करिए. We'll enjoy that. And we can even explore shooting locations at Nagpur. Yeah. Definitely. And indirectly, Jitendra sir is asking invitation to him also as a side rule. Sir, side क्यों? ऐसा उनका I have a lot of things in mind. I'll talk to him personally on that. Sharvari has already spoken to me some time back, so we have good things in mind. Let's see what we can do best for the branch as well as the profession, and we can try to explore that. Yeah. Thank you so much. So I think with this, it's time to conclude. Amir, shall we do that? Yeah, sir. Yeah. So Team WICASA as well as from say students who have connected, thank you so much, and it was very nice session. And we interacted in the best possible manner. Thank you everyone for joining, and let's meet again next time. I think we'll be having another session in this series next month, and with the same title, Fireside Chat, and with some new speakers as well. So thank you one and all, and let's connect again some other day. Yeah, thank you. Signing off. Thank you, Nitesh.